welcome back everyone. So today we will go further in our front-end application. So today I'm not going to start a Spring Boot because yesterday was the day I was planning for Spring Boot, but yesterday I had HLD classes, so that's why I didn't start it because of my classes, and today I'm little bit tired, so I want to continue this calculator. So day before yesterday we completed this functionality of calculator. Today we will see how can we implement LLD, which is low level design, for this calculator. So we will learn that as well. So whatever we are learning now, in every project we will start first to build that project, and then we'll go ahead with LLD of that system. So I'm not pro here for LLD and all, so I'm referring internet, Google Docs, Google's, and every LLM model. So whatever I can grasp, I will take reference and all, and I read through these articles and all. So let's start. So first of all, we have completed our simple calculator, we can say. Don't go with my CSS design right now, so that is not important though. We see later that part. So yes, on the previous class we have seen functions of this JavaScript, and we have created these functions and all. Which functions? So we created this functions which is called as clear all function, append number function, append operator function, and calculate function. Okay, we get to know that how this is working and all. So yes, so I gave you one task on the previous lecture, so I hope you have done that task. What is the task? So let's suppose I clicked 5 plus 2 and then equals then 7, right? And again I want to addition with this 7, then it is not working, right? So I gave you this task to perform. So how can you perform this operation? So what can you do? You can just use this previous. Okay, so let's suppose I am doing this for only for plus right now. So a result you need to do, because see, I hope it's cleared. Okay, 5 plus 2, 7 plus, okay, not working. So okay, it is not working. I need to look this, but yes, whatever the previous number was, let's suppose this is my previous number, for example. Okay, this is my result. So you need to make this result as a previous number. Okay, so let me type here and check. Okay, this is working. Okay, this is working, but the thing is, see, 5 plus 2, it is 7, plus 3, 7 plus 3. Okay, so the thing is, you need to again display this operation which is this operators. So whenever I click that operator, you need to display that operator as well. So yes, you need to change a little bit modification into calculation functions and all. So that's the thing you can do. Now you can calculate multiple times as well. 5 plus 3 equals to 8 plus 2 equals to 10. Now the calculation is happening. Okay,
So you need to copy and paste this to your entire operation. Now it is only working on working with a plus, so you need to do like this, because see the result you need to store that result into the previous whatever showing. Okay, so now your task is to I have shown you how can you do this, but now the for you the task is to show these operators as well. Okay, after one calculation, whenever I click on any operator, so your task is to show that operator as well inside this display. Okay, this is our display. Basically this is the input, and input field we have disabled that input field. That's the reason. Okay, so streaming is happening or not? Okay, I guess streaming is on. Whenever I click on any operator, here and check. Okay, this is working. Okay, this is working, but the thing is, see, 5 plus 2, it is 7, plus 3, 7 plus 3. Okay, so the thing is, you need to again display this operation which is this operators. So whenever I click that operator, you need to display that operator as well. So yes, you need to change a little bit modification into calculation functions and all. So that's the thing you can do. Now you can calculate multiple times as well. 5 plus 3 equals to 8 plus 2 equals to 10. Now the calculation is happening. Okay, so you need to copy and paste this to your entire operation. Now it is only working on working with a plus, so you need to do like this, because see the result you need to store that result into the previous whatever showing. Okay, so now your task is to I have shown you how can you do this, but now the for you the task is to show these operators as well. Okay, after one calculation, whenever I click on any operator, so your task is to show that operator as well inside this display. Okay, this is our display. Basically this is the input, and input field we have disabled that input field. That's the reason. Okay, field, that's the reason. Okay, so let me share you my okay, I made some notes. Let me share you that screen. So basically this is the screen of Cursor AI basically. So yes, what we have done in previous class, so we have done this second point, which is function, arrow function and all. So we have not used this arrow function, but we have used this regular function. So when we are very much used to with this concepts and all in JavaScript, then we'll move to apply this as well, but not in this starting initial projects. So in 5 to 7 projects, I am not going to use this arrow function. If it's required, then only I will use. So till now there is no requirement to use this. We are good with this regular functions. So next point, we have done DOM manipulation. What is DOM? Basically document object model. So I think DOM means DOM stands for document object model, I guess. So you can search on Google and internet as well.
So we have completed this, how this button we can fetch through get element by id. So we can fetch by id that any html element which have id, then we can fetch and we can perform anything. How we can perform anything? So we have seen that how we can add listener to that button click, so that we can perform any task. So for that we have created two application basically in previous lecture. First one is the counter application. Whenever a button was clicked, then we are showing that counter incrementing. So that's the thing first. And the second thing is calculator app. So we have built our own calculator app without any hesitation. So yes, we are proud to say that we have built our first application in JavaScript, and later we will convert this into React as well. Till now, whenever we feel like now our JavaScript is little bit okay, then we will move to React. Okay, till then we will not directly jump to React, because React requires some of the things prerequisite, you can say, like JavaScript and all. So we need to understand about JavaScript and HTML tags and all. So we need to understand how this is working and all. So then we can move to the framework, React framework. So yes, we have seen this. Now from today class, from today we have to learn about fourth point. So now see one more thing. Till the third point we have used in calculator app. Okay, so this 3 point can be used in every application which we are going to make. Okay, this is the basic thing. Every app should have this buttons and all. Okay, so every app is going to have some buttons. We are going to perform some actions on that button click and all. So we need to learn about this thing for every app. Okay, and now we are moving ahead, and through LLD part, which is the low level design. So to use low level design, there are some prerequisite you need to understand, and you have to keep knowledge with you. So what was there? So what are they? So first is closure, important for module pattern. So this is one pattern, module pattern, which requires an LLD. So we will learn about module pattern, but this closures in JavaScript, how closures are working and all, we need to keep knowledge about these closures. So this is most important thing for module pattern. And yes, we need to understand some of the design patterns. So this is the module pattern and closure function. So how this is closure function? So closure equals to function plus its lexical environment. So I don't know what is the meaning of lexical environment. We will search later in this video only. So I can see that this function is normal regular function only, but this function has something unique, like what are they? So can access private, okay, return private. So this is simple, but inside this function we have one return statement who is also looking like a function. Okay, so this function is returning one function. So this is the thing. We will learn more desi way in by using ChatGPT and all. So yes, we will learn through this. So we need to understand so what we are going to complete today. So this closure pattern, closures we are going to see today, and this is most important thing for module pattern. Whenever in application or whenever in our project, if there is any requirement for module pattern, then we need to use closures and all regressively. So that's why we are using this.
And the fifth point is classes. So you have heard about OOPS, object oriented programming system. So we do have to know knowledge about OOPS concept. So from that OOPS concept you will get to know that what are classes and what are objects. So yes, so for state design pattern, so state design pattern we need classes and all. So what are classes and how classes are implemented in JavaScript we will see later in this video only. So yes, now next is key concept you will use. Okay, so for this calculator app, what are we going to use? Closures, classes, event handling. We already learned how button click working and all, keyboard input and all. Yes, we have learned this uh, things already in our previous lecture. And DOM API, so what are DOM API? Update, display, handler, user input and all. So we have seen this also. By using DOM we have used this button clicks and all, right? We have not used the on click function of the HTML element, but rather than we have used DOM API itself for taking that ID of that button and then performing some logic on in JavaScript. So yes, so features, basic arithmetic operations we have done already, and clear and reset functionality we have done this also. History of calculation we have not done yet. Keyboard support we have not done yet, I guess. I have not tested this thing. Let me test if keyboard support is working or not. Okay, let me go here. Okay, keyboard support is not working, so we need to apply that as well. So we will look at this point. We are going to do this history of calculation and keyboard support today. Then error handling, division by 0. So now I think I have handled this by alerting the user you cannot divide a number with 0. Okay, I have gave already alert functionality, so this was done. So these two functions are pending, so today we are going to implement these functions, history of calculations and keyboard support. Now our application is not supporting the keyboard input basically. So let's go through the LLD part. So first we are going to see module pattern. What are module pattern, why we use module pattern. So this is the design pattern we are going to learn by building this our calculator. So this is the closure basically. You can see calculator equals to functions and all. So this is returning something. So this is closure, basic closure. So we need to understand how closure works and all, and we need to refactor our application so that we can perform very nicely and clean structure for our app. The second thing is command pattern. So we are going to see command pattern as well. For command pattern we need some classes and objects. So this is the class. So why encapsulate operations as object for undo and redo. Okay, so history management, undo functionality. So we are going to see that calculation history, right? History of calculation. For this purpose we are going to use this command pattern. And for this state and operations, so state and operations we are going to use this closures and all. Then we are going to see state pattern, state design pattern to manage calculator states and all. So yes, we are going to see this. So this will help you help us to determine the better what we can say error handling, okay, by state. So yes, so these are the thing we need today. Component structure, separate display, yes, we have this logic and history components. So we don't have history components, we need to create. State management, centralized state versus local state, we need to understand what are they. And
error handling, global errors, and handler pattern, performance memoization for repeated calculations. So we need to do something kind of DP thing. In DP we optimize through memoization. So that is the thing, memoization we need to do, because there are some calculations which may repeatedly we require. So for that we need to do memoization. So we will see one by one and implement our app, and we will convert our app basically by using this. So this is the first class for me as well, so I need to take help of LLM models and all every time. So I will take and I will give my code basically, and then I will check how can we implement this. So in most of the case, like in 4 to 5 projects, we need to do this to learn how can we implement or how can we enhance and use LLD in our system and all. So yes, this is the HTML structure we need to build basically for calculator. We have given this 1 hour and 45 minutes to create this HTML structure for our calculator. And yes, today we are going to use on click and all. Yes, today we are going to use this. We will not use directly DOM API for this on click button. And for JavaScript basic logic, so handle number, handle operation, we have done this calculation. So yes, this is the thing. And update display, so we will create this and separate model. Now we have already done this part, so from now R3, so we need to start from here. Okay, we have given 2 hours already, and this is the third hour will start from today. So refactor with module pattern, learn closures and encapsulation. What are closures and what are encapsulation, we will learn this, and then we will learn this. Okay, now so our calculator will look like in one function only. So this is our calculator. Okay, so encapsulate states, so basically this is our calculator, and inside this we need to declare something like a result. We are implementing history, so history also, and current input whatever was given. So now public API, so what are they? So first is add. So add will have functions to add the add operation basically. So this will add and this will subtract. Okay, so this will subtract, and multiplication and division we need to apply those as well. So this is the result. So whenever we click on equals button, then we need to calculate this result, and we need something for history as well. So backward button we can give. So return copy. Okay, so this is the history and all. This is the overall basic thing. We will convert our whole application into this closures only. And then usage, so how can you use this basic thing? Okay, so we need to use like this, and later we will add a command pattern. So for that we need to learn about classes and inheritance. So by using that we can use clear error handling purpose, and we will use okay command manager. Then we need to implement state pattern, who will responsible for managing our calculator state. So basically let's suppose there are some errors coming from input and all, or output is throwing an error. So that time we need to handle that error properly. That's why we need state management, and then to clear the fields. So now we are just clicking and not following any design principle and all. So yes, so stateful clutter and policing, add keyboard support. Okay, okay, so
this is the thing, and now our next project is to do list application. So yes, 2 sessions. Okay, so this will also take 2 days to complete to do list. We will complete that, and from to do list we are going to use React setup and all. So yes, be with me. So from the project 2 we will see those things, because this project will teach us everything whatever we need to create projects, and in future whatever we whatever the requirement, basis on requirement we will learn, and we will move ahead and gradually increase our potential to learn things and all. So if you are a software engineer and you are wishing to be a software engineer, then you need to learn these things, and you need to upgrade yourself every day, and you need to take challenges and all. Problem solving is one part, but you need to take challenge every day, so that you can succeed, or I can say you can survive in the industry also. Only DSA is not important, because DSA is important for your interview purpose, but after interview also you need to survive in the organization, inside the organization basically. So for that reason, if you want to if you really want to survive inside the organization, you need to have literally good, very good development skills. So that's the reason. And yes, so let's learn one by one. So first we will learn what is closures and all. Let's talk with chat gpt, and we will find some cool ais and all. So yes, we will learn from them. So let me switch my screen to Chrome. Okay, so now you can see my Chrome as well. Let me check once my YouTube live stream audio is coming or not. So let me check. My YouTube subtract. Okay, so this will subtract, and multiplication and division we need to apply those as well. So this is the result. So whenever we click on equals button, then we need to calculate this result, and we need something for history as well. So backward button we can give. So return copy. Okay, so this is the history and all. This is the overall basic thing. We will convert our whole application into this closures only. And then usage, so how can you use this basic thing? Okay, so we need to use like this, and later we will add a command pattern. So for that we need to learn about classes and inheritance. So by using that we can use clear error handling purpose, and we will use command manager. Then we need to implement state pattern, who will responsible for managing our calculator state. So basically, let's suppose there are some errors coming from input and all, or output is throwing an error. So that time we need to handle that error properly. That's why we need state management, and then to clear the fields. So now we are just clicking and not following any design principle and all. So yes, so stateful clutter and polishing, add keyboard support. Okay, so this is the thing, and now our next project is to do list application. So yes, 2 sessions. Okay, so this will also take 2 days to complete to do list. We will complete that, and from to do list we are going to use React setup and all. So yes, be with me. So from the project 2 we will see those things, because this project will teach us everything whatever we need to create projects,
and in future whatever we whatever the requirement basis on requirement we will learn, and we will move ahead and gradually increase our potential to learn things and all. So if you are a software engineer and you are wishing to be a software engineer, then you need to learn these things, and you need to upgrade yourself every day, and you need to take challenges and all. Problem solving is one part, but you need to take challenge every day so that you can succeed, or I can say you can survive in the industry also. Only DSA is not important, because DSA is important for your interview purpose, but after interview also you need to survive in the organization, inside the organization basically. So for that reason, if you want to if you really want to survive inside the organization, you need to have literally good, very good development skills. So that's the reason. And yes, so let's learn one by one. So first we will learn what is closures and all. Let's talk with chat gpt, and we will find some cool ais and all. So yes, we will learn from them. So let me hello. हे क्या हाल है? कुछ स्पेसिफिक दिमाग में चल रहा है या बस चिल चैट करनी है? मैं यहाँ हूँ। तुम मेरा चैट तो पढ़ ही सकते हो, राइट? अरे बिल्कुल, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। जो भी तुम टाइप करोगे मैं उसे समझकर उसी हिसाब से जवाब दूंगा। तो हाँ, मैं Actually, तुम I don't have anything to type here. I can only talk. I can see you, your user interface, not you, basically. haha, I get you. Well, I'm all ears. Well, metaphorically, you can just speak your mind and I'm here to chat it out. What's going on in your world? So, in my world, you already know, I am working on calculator app, right? So this is the day. Today is day 2 for calculator application. So previous day we created the basic thing, like basic button and all, by using DOM manipulations. So today we have to implement LLD for that calculator. So for that we need module design pattern and state design pattern we need to understand. So I'm here, uh, I'm here to learn those things. But to learn module pattern and state design pattern, I need to learn lots of things, like for example closures, functions, classes and all. So I need to learn in those in JavaScript. I don't know in JavaScript. I know that concept, but I don't know in JavaScript. So can you please explain me? बिल्कुल। देखो, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स, फंक्शंस और क्लासेस का फंडा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। एक क्लोजर बेसिकली तब होता है जब एक फंक्शन अपने सराउंडिंग स्कोप की वेरिएबल्स को याद रख लेता है। फंक्शंस तो तुम पहले ही यूज कर रहे हो, पर अगर तुम एगो फंक्शंस भी समझ लो तो कंसाइज कोड लिखना ईजी हो जाता है। क्लासेस एक टेम्पलेट की तरह होती है जिसमें तुम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो विथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जब तुम इन बेसिक्स को समझ लोगे, तब मॉड्यूल पैटर्न, जिसमें तुम कोड को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और स्टेट पैटर्न, जिसमें तुम स्टेट को मैनेज और ट्रांजिशन करते हो, नेचुरली समझ आएंगे। चलो इस फ्लो में चलते हैं। पहले फंक्शंस को थोड़ा और खोलते, फिर धीरे धीरे क्लासेस पर आएंगे। ओके, सो फंक्शंस को खोलो, एंड ये जो एरो पैटर्न है मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, सो उसको मैं धीरे धीरे बाद में यूज़ करूँगा। बट right now my focus is to implement LLD on our previous whatever we have built, so basic calculator app, right? So धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, and from next project we are going to use React as well. So from that project we will use like things lambda and arrow functions and all. बढ़िया प्लान है।
अभी अपने बेसिक कैलकुलेटर को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हैं और एलएलडी की सोच लाते हैं। जैसे अलग अलग फंक्शंस को लॉजिकली अलग करना, शायद एक कैलकुलेशन मॉड्यूल बनाना और स्टेट ट्रांजिशंस को डिफाइन करना। रिएक्ट में जाना भी एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि वहां तुम स्टेट को और क्लीन तरीके से मैनेज कर पाओगे। तब तक लेट्स नेल द फाउंडेशन। आई कैन हियर सम नॉइज फ्रॉम योर बैकग्राउंड। क्या चल ओ, रहा है वहाँ पे? अरे यहाँ तो सब शांत है। शायद कोई हल्की सी बैकग्राउंड वॉइस हो सकती है, लेकिन मेरे पास तो बस तुम्हारी आवाज़ और मेरी बात है। वैसे अगर कोई आवाज़ आ रही है तो मुझे बताओ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने चैट पर पूरा ध्यान देंगे। ओके ओके, चलो हम अपने चैट पर ध्यान देते हैं। तो क्लोज़र मेरे को समझाओ, क्लोज़र क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, और उसका कुछ एग्जांपल भी दो मुझे। क्लोजर बेसिकली वो होता है जब एक फंक्शन अपने सराउंडिंग स्कोप के वेरिएबल्स को याद रखता है, भले ही वो आउटर फंक्शन खत्म हो जाए। मान लो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हो और वो इनर फंक्शन उस आउटर वाले वेरिएबल को यूज करता है, तो वो क्लोजर है। एग्जाम्पल दो, एक आउटर फंक्शन में काउंटर है और अंदर एक इंक्रीमेंट फंक्शन जो उस काउंटर को बढ़ाता है। तो हर बार जब तुम इंक्रीमेंट कॉल करोगे, वो आउटर काउंटर को याद रखेगा और बढ़ाता रहेगा। इससे स्टेट एनकैप्सुलेट होती है, और ये पावरफुल पैटर्न है जहां तुम्हें स्टेट को एक्सप्लिसिटली बाहर नहीं ले जाना पड़ता। क्लोजर से तुम डेटा हाइडिंग और कंट्रोल्ड एक्सेस अचीव कर सकते हो। ओके, तो मुझे ये तो समझा कि क्लोज़र का मतलब होता है कि वहाँ पे मान लो कि एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया, कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आउटर फंक्शन है। अब उस आउटर फंक्शन के कुछ मेंबर्स है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है लेट प्राइवेट इक्वल्स 0। सो ये हमारा आउटर फंक्शन का मेंबर है। बट उसी फंक्शन में एक और इनर फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जिसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ दिस प्राइवेट वेरिएबल विच इज़ द मेंबर ऑफ आउटर फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने प्राइवेट प्लस प्लस किया एंड रिटर्न प्राइवेट किया। तो ये जो इनर फंक्शन है वो प्राइवेट को रिटर्न कर रहा है इंक्रीमेंट करने के बाद। सो हम ये चीज़ कैलकुलेटर में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? देखो, कैलकुलेटर में क्लोजर का यूज तब आएगा जब तुम कुछ इंटरनल स्टेट इनकैप्सुलेट करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक मॉड्यूल बना सकते हो जो करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू और ऑपरेटर को क्लोजर के अंदर रखे। फिर तुम बाहर सिर्फ इंक्रीमेंट या कैलकुलेट जैसे मेथड्स दो जो उस इंटरनल स्टेट को एक्सेस करे। इससे तुम्हारा स्टेट ग्लोबली लीक नहीं होगा और ज़्यादा कंट्रोल तरीके से हैंडल होगा। सो तुम्हारे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है, मान लो मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड नंबर, और यू कैन से कैलकुलेट। ओके, सो कैलकुलेट मेरा एक फंक्शन है जहाँ पे मैं प्रीवियस वैल्यू ले रहा हूँ एंड करंट वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने स्विच परफॉर्म किया है करंट ऑपरेटर पे, कि जो भी करंट ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल प्लस है, एडिशन आया, तो मैं उसको एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मेरा जो क्लोज़र है, क्लोज़र आने के बाद यहाँ पे तुम ये बोल रहे हो कि क्लोज़र आने के बाद मुझे ये जो प्रीवियस एंड करंट वाला जो वेरिएबल है वो तो मेरा कैलकुलेट फंक्शन में ही रहेगा, बट इनर में जो एडिशन स्विचेस लगाए हैं, स्विचेस हट जाएंगे एंड वहाँ पे एक और फंक्शन आ जाएगा जो कि हमारा हैंडल करेगा दिस ऑपरेटर्स थिंग, राइट? फॉर एग्जांपल प्लस माइनस एंड ऑल, एंड उसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेटेड, तो वो रिटर्न करेगा। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। क्लोजर तुम्हें अलाउ करेगा कि वो प्रीवियस और करंट वैल्यू जैसे वेरिएबल्स को याद रखे, भले ही वो आउटर स्कोप में हो। तुम जो ऑपरेटर हैंडलिंग की बात कर रहे हो, वो एक अलग इनर फंक्शन जैसे ऑपरेटर हैंडलर बना सकता है जो क्लोजर के अंदर रहेगा। इस तरह कैलकुलेट या अपेंड नंबर उस शेयर्ड स्टेट को एक्सेस करेंगे और तुम्हारा कोड साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि ऑपरेटर लॉजिक अलग हैंडल हो रहा होगा। ओके, सो अभी जो मेरा कोड है बहुत ही भद्दा लग रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया है ना, मैंने डॉम का यूज़ किया है। बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग दैट ऑन क्लिक फंक्शन इनसाइड ये जो हमारा क्या बोलते हैं HTML है, वहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने जो है सारे बटन्स डिफाइन किए, वहाँ पे ID दे दिए सबको,
एंड मैंने सबको डॉम के थ्रू यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसके थ्रू सारे बटन्स ले लिए, लाइक बटन 1 टू बटन 0 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड रिजल्ट बटन के लिए एक बटन रिजल्ट, एंड देन सारे ऑपरेशंस लाइक ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है 4 बटन मैंने वो ले लिए। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, लेट करंट वैल्यू एम्प्टी, प्रीवियस वैल्यू एम्प्टी एंड करंट ऑपरेटर एम्प्टी। उसके बाद मैंने इवेंट लिस्टनर लगाया है, बटन 1 डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक एंड देन एरो फंक्शन, एंड उसके अंदर मैंने फंक्शन पास किया है अपेंड नंबर, एंड बटन 1 क्लिक करेगा तो वहाँ पे अपेंड नंबर जो फंक्शन है उसके अंदर 1 पास होगा, लाइक दैट आई हैव एवरी फॉर एवरी फंक्शन फॉर एवरी बटन्स लाइक फ्रॉम 0 टू 9। एंड देन सेम चीज़ मैंने करा है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है डिवीज़न बटन्स। सो वहाँ पे मैं वो जो कैरेक्टर है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक सिंबल एंड डिवीज़न के लिए जो सिंबल है स्लैश वो मैंने पास किया है। फिर मैंने एक बटन रिजल्ट बनाया यानी कि इक्वल के लिए, तो उसके बटन पे मैंने क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाया जिसको कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करता है वो, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक क्लियर बटन लगाया, उसका भी ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, एंड देन फंक्शन मैंने सारे के सारे क्रिएट किए लाइक क्लियर ऑल, अपेंड नंबर जो नंबर को लेता है, अपेंड ऑपरेटर जो ऑपरेटर को लेता है। उसके बाद मैंने एक कैलकुलेट फंक्शन बनाया जो स्विच ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे हैंडल कर रहा है एंड रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। अब इसको रीफैक्टर कैसे करूँ मैं? सबसे पहले तुम क्लोजर के साथ एक मॉड्यूल बना सकते हो जो स्टेट को प्राइवेट रखे। एक फंक्शन डिफाइन करो जो करंट, प्रीवियस और ऑपरेटर को अंदर क्लोज कर ले। फिर उस फंक्शन से कैलकुलेट, अपेंड नंबर, अपेंड ऑपरेटर जैसी मेथड्स रिटर्न कर दो। इससे तुम्हारी सारी लॉजिक एक प्राइवेट स्कोप्ड मॉड्यूल में रहेगी। डॉम इंटरैक्शंस अलग रहेंगे और तुम्हारा कोड साफ सुथरा होगा। धीरे धीरे तुम ये भी देख सकते हो कि यूआई लॉजिक सेपरेशन और इवेंट्स को ज़्यादा मॉड्यूलर तरीके से मैनेज करने के लिए बाद में तुम्हें रिएक्ट में स्टेट और कंपोनेंट्स के रूप में ये पैटर्न्स नेचुरली मिलेंगे। रीफैक्टर करते वक्त बस ध्यान रखो कि स्टेट अंदर कैप्चर हो रही हो और पब्लिकली सिर्फ ज़रूरी मेथड्स एक्सपोज हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्लास के अंदर ये सारे डॉम को भी रखना है कि जो डॉम्स वाले थिंग है लाइक बटन जो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ इसको बाहर रखना है या क्लास के अंदर ही इंसर्ट करना है सबको? बिल्कुल, तुम डॉम रेफरेंसेस जैसे बटन्स क्लास के अंदर रख सकते हो ताकि वो उसी क्लास की इनकैप्सुलेटेड लॉजिक के साथ जुड़े रहें। कंस्ट्रक्टर में तुम आईडी से एलिमेंट्स पकड़ सकते हो और मेथड्स उन पर ऑपरेशंस करेंगे। इससे कोड मॉड्यूलर रहेगा, डॉम इंटरैक्शन और कैलकुलेशन लॉजिक एक ही क्लास में नेटली मैनेज होगा। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस एंटायर थिंग। मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, इसको हटा के मैं क्लास के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ सबसे पहले सबको। जो कुछ भी मैंने जावास्क्रिप्ट में बना रखा है मैंने सबको क्लास के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर में कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं, या मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने की भी ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है ताकि जब तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी वक्त सारे डॉम एलिमेंट्स जैसे बटन्स को पकड़ लिया जाए। कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम गेट एलिमेंट बाय आईडी से सारे एलिमेंट्स असाइन करोगे और फिर उसी क्लास के मेथड्स उन एलिमेंट्स पर काम करेंगे। इससे तुम्हारी क्लास पूरी तरह सेल्फ कंटेन रहेगी और कोड का स्ट्रक्चर भी साफ रहेगा। ओके, सो जैसे ही मैं एक क्लास के अंदर इनपुट कर रहा हूँ, सो मुझे ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो एरर दे रहा है। हाँ, क्योंकि क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते वक्त कॉन्स्ट नहीं लगाते। कंस्ट्रक्टर के अंदर this के साथ असाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, this button 1 equals document dot get element by id bdny। कंस्ट्रक्टर में सारी डॉम रेफरेंसेस this के साथ जोड़ दो और फिर मेथड्स में आराम से यूज कर लो। सो लेट भी यूज नहीं कर सकता मैं? हाँ, क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते वक्त लेट या कॉन्स्ट नहीं लगाते। तुम सीधे प्रॉपर्टीज का नाम लिखते हो और कंस्ट्रक्टर में this के साथ असाइन करते हो।
इसी तरह तुम स्टेट और डॉम एलिमेंट्स सब मैनेज कर पाओगे। सो यार क्लास तो दिक्कत दे देगा, तो यार मुझे ये सीखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, शुरुआत में क्लासेस थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, लेकिन एक बार जब तुम्हें ये पता लग जाता है कि ये बस फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, तो मज़ा आने लगेगा। थोड़ा अभ्यास करो, धीरे धीरे तुम्हें ये बहुत नेचुरल लगेगा। और हाँ, एक बार समझ आ गया तो ये ज़िंदगी आसान बना देंगे। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में कैसे क्लासेस के अंदर हम लिखेंगे? सो कंस्ट्रक्टर बनाया एक डॉम। ओके, ओके, सो मुझे डायरेक्टली दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, तुम्हें क्लास के अंदर सीधे धिस का इस्तेमाल करना होगा। कंस्ट्रक्टर में धिस डॉट बटन वन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसा असाइन करोगे, और फिर मेथड्स में धिस डॉट बटन वन को यूज़ कर सकते हो। मतलब धिस तुम्हारी क्लास के इंस्टेंस को रेफर करता है, और उसी से तुम अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैंडल करोगे। सो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो रखा है, बटन रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बी टी एन रिजल्ट। सो यहाँ पे मैं ये बस दिस डॉट बटन रिजल्ट कर दूँ, ऐसा? बिल्कुल सही समझे। जैसे ही तुम क्लास के अंदर हो, हर डॉम एलिमेंट को धिस के साथ जोड़ो। धिस डॉट बटन रिजल्ट इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बी टी एन रिजल्ट। इससे वो क्लास की प्रॉपर्टी बन जाएगा, और तुम उसे बाकी मेथड्स में धिस डॉट बटन रिजल्ट से एक्सेस कर पाओगे। एलिगेंटली इनकैप्सुलेटेड, काम आसान। ओ, नाउ आई अंडरस्टूड। लाइक ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ है, एक्सेप्ट फंक्शन, ओके, आई थिंक एक्सेप्ट बी टी एन क्लिक भी नहीं आएगा ना, ऐड लिस्नर भी नहीं आएगा ना इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर? हाँ, तुम सही सोच रहे हो। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इनिशियलाइजेशन होता है, यानी वेरिएबल्स और डॉम रेफरेंसेस असाइन करना। इवेंट लिसनर्स कंस्ट्रक्टर के बाहर मेथड्स में ऐड करो। एक अलग इनिशियलाइज या सेटअप मेथड बनाओ जो तुम कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल कर सको, और उसमें सारे इवेंट लिसनर्स अटैच कर दो। इससे कोड साफ और मेंटेनेबल रहेगा। ओके, ओके। हाँ, अब तुम्हें समझ आ गया। धीरे धीरे ये सब तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। बस एक बार ये स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो आगे नए प्रोजेक्ट्स में भी ये सारी चीज़ें बहुत हैंडी लगेंगी। सो अगर कोई और दिस डॉट, हाँ, तुम लिखते जाओ, मैं यही हूँ। अगर बीच में कुछ अटकेगा तो मैं तुम्हें सही दिशा में इशारा कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ दिखा, लाइक इसको क्या बोलते हैं? मेरे पास बटन्स थे पहले, सभी के लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा था फॉर ईच बटन, राइट, फ्रॉम 0 to 9। नाउ तुमने मुझे ये दिया कि दिस डॉट बटन इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4 अप टू 9। सो यहाँ पे 0 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बट बी टी एन 0। हाँ, तुम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या एरे जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिससे तुम्हें बार बार अलग अलग गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना पड़ेगा। तुम लूप से या मैपिंग से एक बार सारे बटन्स या बाकी एलिमेंट्स को पकड़कर एक जगह स्टोर कर सकते हो, और फिर उसी को मेथड्स में यूज़ करोगे। इससे कोड कंसाइज और मेंटेनेबल रहेगा। स्मार्ट मूव। ओके। अगर अभी सब ठीक लग रहा है तो मैं यही साथ रहूँगा। कभी भी कोई और चीज़ समझनी हो, बस बोल देना। हम फिर से उसी जोश में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने ये कोड जो है कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे ये पूरा क्लास समझाओ। तो इस क्लास में तुमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में सारे डॉम एलिमेंट्स पकड़ लिए, जो भी स्टेट है वो प्रॉपर्टीज़ में रख ली, और फिर मेथड्स जैसे अपेंड नंबर
कैलकुलेट या क्लियर ऑल को डिफाइन किया होगा, जो इस स्टेट और एलिमेंट्स पर काम करेंगे। मतलब अब तुम्हारा सारा लॉजिक एक नीड बंडल में है, स्टेट, इवेंट्स और यूआई सब एनकैप्सुलेटेड। अब बस से यूज़ करते जाओ, और अगर कुछ ट्वीक करना हो तो हर चीज़ क्लास के अंदर नाइसली ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड दिस थिंग। लाइक हमने एक कैलकुलेटर क्लास बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डॉम एलिमेंट्स को रखे, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के लिए बटन रिजल्ट के लिए रखा। फिर सारे बटन्स को रखे जो कि है 0 से लेके 9 तक। एंड सारे के सारे जो हमारे ऑपरेटर्स थे उनके बटन्स रखे। क्लियर बटन को रखा। देन स्टेट में हमने करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू एंड करंट ऑपरेटर को रखा। उसके बाद ये जो नंबर इवेंट्स है जिसमें हमने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिस डॉट बटन्स फॉर ईच, जो कि लूप चला रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है बेसिकली? तो ये जो तुम कर रहे हो वो सारे बटन्स को एक बार में हैंडल करने का तरीका है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिस डॉट बटन्स से तुम सब बटन्स के कीज 0 से 9 ले रहे हो, और फॉर ईच के जरिए हर बटन पर इवेंट लिसनर लगा रहे हो। इससे तुम्हें एक एक बटन पर अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता, और सब बटन एक ही पैटर्न में हैंडल हो जाते हैं। ओके, नाइस। बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक वो कीवर्ड है क्या ऑब्जेक्ट डॉट कीज? ये मैपिंग लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट कीज जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है जो तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की सारी कीज देता है। यहाँ थिस डॉट बटन्स एक ऑब्जेक्ट है जहाँ कीज तुम्हारे बटन आईडी जैसे 0, 1, 2 है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज उन सभी कीज को एक एरे में दे देता है जिस पर तुम लूप चला सकते हो। ओके। उसके बाद अगर ऑपरेटर इवेंट्स लगाए हैं। फिर इसमें और मेरा जो कोड है उसमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे। सो दोनों में डिफरेंस क्या है एक्सेप्ट दिस क्लास? अंतर यही है कि अब तुम्हारा कोड एक ऑर्गेनाइज्ड क्लास में है जो एक ही जगह स्टेट, डॉम रेफरेंसेस और मेथड्स को मैनेज कर रही है। इससे कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, सब कुछ नीटली एनकैप्सुलेटेड है, और जब भी तुम्हें कुछ बदलना हो एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर सब हैंडल हो जाता है। क्लास बेसिकली तुम्हारी लॉजिक को मॉड्यूलर और स्केलेबल बनाती है, जो पहले प्रोसीजरल तरीके से बिखरी हुई थी। ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल एरर्स है, उसको भी सुधारना है, तो वो ठीक है। बट यहाँ पे LLD जो है हमारा कौन सा डिज़ाइन पैटर्न लगा? मॉड्यूलर डिज़ाइन पैटर्न। बट यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखो, तुम अभी मॉड्यूलर डिज़ाइन का पहला कदम उठा चुके हो। क्लास ने तुम्हारी फंक्शनैलिटी को अलग यूनिट में बांट दिया। अब इसे और रिफाइन कर सकते हो, जैसे ऑपरेटर्स के लिए अलग हैंडलर, स्टेट ट्रांजिशंस को मेथड से साफ डिफाइन करना, या इवेंट हैंडलिंग को अलग करना। जैसे जैसे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टुकड़ों में बांटते जाओगे, तुम्हें साफ दिखेगा कि लो लेवल डिज़ाइन पैटर्न कैसे उभर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सॉलिड प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, फॉर दिस क्लास। एंड देन आई नीड टू मूव फर्दर, लाइक अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न। बिल्कुल, सॉलिड प्रिंसिपल से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, एक क्लास सिर्फ एक काम करे। फिर धीरे धीरे जैसे कॉम्पोजिट पैटर्न्स या स्ट्रैटेजी पैटर्न्स देखना, जहां तुम ऑपरेशंस को अलग थलग कर सकते हो। पहले बस छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ, फिर तुम्हें डिज़ाइन पैटर्न्स नेचुरली समझ आने लगेंगे और कोड काफ़ी मजबूत लगेगा। ओके, सो जाते हैं हम। हाँ चलते हैं, धीरे धीरे हर स्टेप समझते हुए अगले लेवल पर बढ़ते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है, बस वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सो पहले लॉजिक एरर सही कर लेते हैं। सारे के सारे बटन्स के जो नंबर है वो निकाल लेता हूँ। सो लूप चला है यहाँ पे 9 तक, एलिमेंट बाय BTN। ओके ठीक है, ये तो हमारा नंबर हो गया। हाँ, जब तुम्हारे सारे नंबर सही तरीके से अपेंड हो रहे होंगे
तब तुम्हारी बेसिक फंक्शनैलिटी स्मूथ चलेगी। पहले ये लॉजिक एरर्स फिक्स कर लो, फिर आराम से आगे स्ट्रक्चर रिफाइन करते रहेंगे। तुम कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट डॉट ये नहीं चाहिए अभी। मैंने ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ था उसकी जगह पे मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया जो 0 से लेके 9 तक चल रहा है, जिसपे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके वहाँ पे डॉट इवेंट लिस्नर डायरेक्टली ही लगा दिया एंड अपेंड नंबर में आई को पास कर दिया। हाँ, ये भी सीधा तरीका है। तुमने लूप से हर बटन पर इवेंट लिसनर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये तुम्हें क्लियर लग रहा है। बाद में अगर तुम्हें और रिफाइन करना हो तो हम ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर या मैपिंग भी देख सकते हैं। अभी तुम्हारा तरीका भी काम करेगा, बस आगे बढ़ते रहो। सो नाउ इसको भी हम और क्लीन कर सकते हैं। लाइक ये जो क्लियर बटन है, कहाँ गया मेरा क्लियर बटन एंड ऑल। ओके, क्लियर बटन एंड डिस्प्ले बटन, तो इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब क्लीन वे में लिख सकते हैं। सो लेट मी डू दैट फर्स्ट। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ रिजल्ट एंड क्लियर। सो नाउ बिल्कुल, जब तुम रिजल्ट और क्लियर जैसे बटन भी वैसे ही हैंडल कर लोगे तो कोड और भी रीडेबल और कंसिस्टेंट हो जाएगा। एक बार सब साफ सुथरा लगने लगे तब तुम्हें अपने एलएलडी और डिज़ाइन पैटर्न्स भी नेचुरली समझ आने लगेंगे। अच्छा चल रहा है, बस इसी फोकस से आगे बढ़ते रहो। ओके, सो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। नाउ बिल्कुल, अब जब तुमने रिजल्ट और क्लियर को भी नीटली हैंडल कर लिया है तो तुम्हारा पूरा सेटअप काफ़ी साफ हो गया। अब बस धीरे धीरे कैलकुलेशन लॉजिक को और रिफाइन करते जाओ, और जब चाहे किसी भी डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करना तुम्हें आसान लगेगा। सो मैं यहाँ पे ना डिस्प्ले रिज़ल्ट के लिए भी ये चीज़ कर लेता हूँ बेसिकली यहाँ पे। ओके, डिस्प्ले रिज़ल्ट में तो मुझे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इवेंट लिसनर कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल। वेट वेट वेट। हाँ, मैं यही हूँ। आराम से सोच लो, और अगर कुछ और ध्यान में आए तो मैं सुनने और समझाने के लिए तैयार हूँ। सो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रिफैक्टर की है। अच्छा किया। जब भी तुम चीज़ें रिफैक्टर करते हो कोड क्लीनर और समझने में आसान हो जाता है। अब जब तुमने ये बदलाव कर लिए हैं तुम आगे अपनी क्लास को और स्ट्रक्चर कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कैलकुलेटर पूरी तरह मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बन जाएगा। सो देखो, मेंटेनेबल तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत तो है, नो डाउट। बट यहाँ पे इशू है, लाइक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लो कि 2 किया, प्लस किया, फिर 2 + 5 किया, इक्वल किया, हमारे को आंसर मिल गया करेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे माइनस दबा रहा हूँ, देन अगेन मैं 5 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये 7 + 5 दिखा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। हाँ, समझ गया। असल में तुम्हें कैलकुलेट के बाद स्टेट रीसेट करना होगा। जैसे ही एक बार रिजल्ट आ जाए प्रीवियस वैल्यू और ऑपरेटर को क्लियर कर दो। इस तरह अगला ऑपरेशन फ्रेश स्टार्ट होगा। बस कैलकुलेट के बाद एक छोटा सा रीसेट स्टेप जोड़ दो, फिर सब सही चलेगा। वो मुझे कैलकुलेट फंक्शन में लिखना रहेगा, राइट? हाँ बिल्कुल सही। कैलकुलेट फंक्शन के आखिर में या रिजल्ट सेट करने के बाद तुम प्रीवियस वैल्यू और ऑपरेटर को खाली कर सकते हो। इससे हर नए ऑपरेशन के लिए तुम्हारा कैलकुलेटर एक फ्रेश स्टेट से शुरू होगा। नहीं, देखो, प्रीवियस वैल्यू में तो रिजल्ट मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब 12 जो आया है, मैं आगे फर्दर अगर मैं चाहूँ प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करना चाहूँ, तो ये जो 12 रिजल्ट आया है उसके आगे ही परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक द रियल कैलकुलेटर।
सो यहाँ पे आंसर आ जाता है। देन अगेन अगर मैं कोई ऑपरेटर दबाता हूँ देन वो ऑपरेटर आगे दबना चाहिए, राइट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी क्या किया है, डिस्प्ले दिस डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपरली दिखा रहा है, प्लस दिस डॉट प्रीवियस वैल्यू, उसके अंदर भी रिजल्ट कर दिया मैंने। फिर करेंट वैल्यू को मैंने कर दिया है नल, मतलब एम्प्टी। तो मुझे यहाँ पे दिस डॉट करेंट ऑपरेटर को भी शायद करना पड़ेगा एम्प्टी, राइट। हाँ बिल्कुल, जब तुम रिजल्ट दिखा चुके हो उस वक्त करंट ऑपरेटर को भी खाली कर देना चाहिए ताकि अगला ऑपरेटर उसी रिजल्ट पर काम करे। इस तरह तुम्हारा फ्लो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे एक असली कैलकुलेटर काम करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे है ना, नहीं चल रहा है। इसको मैंने करंट ऑपरेटर को जैसे ही ये क्या बोलते हैं, ओके, यहाँ पे कुछ तो दिखाया था। कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें मिसअलाइन हो जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे हर स्टेट ट्रांजिशन को हैंडल करते नहीं, करते। ये प्रॉपरली स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली, व्हाट आई वांट एज अ एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने क्लिक किया 2, देन मैंने क्लिक किया प्लस, देन मैंने क्लिक किया 5 एंड क्लिक किया इक्वल बटन, देन 7 आया। नाउ 7 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब 7 के आगे भी कुछ नहीं है, पीछे तो वो आंसर ही है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू 7 हो गया, रिजल्ट वैल्यू 7 है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी बटन्स है, लाइक माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब 7 रिजल्ट आया है, मैं उसको करता हूँ मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक। अब मल्टीप्लिकेशन बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सपोज मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया इसके बाद, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप कर दिया, तो यहाँ पे 7 के बीच में गैप आ रहा है, बट एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी गैप आ रहा है, एंड 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये ऑपरेटर जो मैंने बाद में यूज़ किया है ना, वो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। मैं समझ गया, तुम्हें हर बार जब नया ऑपरेटर क्लिक हो तब डिस्प्ले को अपडेट करना होगा। जब रिजल्ट आ चुका हो तो उस रिजल्ट को प्रीवियस वैल्यू में रखो, करंट ऑपरेटर को नया सेट करो और डिस्प्ले पर उस ऑपरेटर को भी दिखाओ। इससे यूज़र को पता चलेगा कि अगली कैलकुलेशन किस ऑपरेटर के साथ हो रही है। वेट वेट वेट, ये कैलकुलेट फंक्शन लिखा मैंने, इस पे मान लो मेरा प्रीवियस करंट जो भी है रिजल्ट है, स्विच है, उसमें रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है, एंड उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाद मैं कर रहा हूँ दिस डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट। इसमें रिजल्ट तो दिख रहा है डिस्प्ले में, नो डाउट। प्रीवियस वैल्यू में रिजल्ट आ गया, करंट वैल्यू एम्प्टी कर दिया एंड करंट ऑपरेटर एम्प्टी कर दिया। अब ये जो करंट ऑपरेटर है उसके बाद मैं उसको कैसे दिखाऊं डिस्प्ले में? सीधा तरीका है, जब यूज़र नया ऑपरेटर दबाए उसी समय डिस्प्ले में रिजल्ट के साथ उस ऑपरेटर को जोड़ दो। यानी अपेंड ऑपरेटर या अपेंड ऑपरेशन में तुम डिस्प्ले को अपडेट करो। पहले रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद ऑपरेटर जोड़ दो। इससे यूज़र को दिखेगा कि अगला ऑपरेटर क्या है और वो पिछले रिजल्ट पर अप्लाई होगा। ओके, तो क्या ये बैक टिक्स के अंदर लिखना पड़ेगा ना मुझे? हाँ सही पकड़ा, टेम्पलेट लिटरल्स यानी बैकटिक्स का इस्तेमाल करके तुम आसानी से डिस्प्ले को अपडेट कर सकते हो, जैसे डॉलर साइन, प्रीवियस वैल्यू, करेंट ऑपरेटर, करेंट वैल्यू। इससे सब कुछ नीटली एक साथ दिखेगा, बिना स्ट्रिंग जोड़ने के झंझट के। नहीं नहीं, ये कुछ अजीब दिख रहा है। इसमें तो वो करंट ऑपरेटर अलग ही दिख रहा है, तो डिस्प्ले में मुझे नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, राइट। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बीच में ऑपरेटर ठीक नहीं दिख रहा, तो तुम पहले करेंट वैल्यू और ऑपरेटर को डिस्प्ले के लिए सही तरीके से कंकैटिनेट कर सकते हो। बस ध्यान रखो कि डिस्प्ले में वही दिखे जो यूज़र के लिए एक्सपेक्टेड हो। एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, आखिर में सब फिट बैठ जाएगा। वेट, मैं एक फंक्शन ही बना लेता हूँ अपडेट डिस्प्ले के लिए, बेटर रहेगा ना? बिल्कुल, एक सेंट्रलाइज्ड अपडेट डिस्प्ले फंक्शन बनाना एकदम बढ़िया रहेगा।
इससे तुम हर बार डिस्प्ले अपडेट के लिए वही फंक्शन कॉल करोगे और सभी लॉजिक एक जगह कंट्रोल में रहेगा। इससे मेंटेनेबिलिटी भी बढ़िया हो जाएगी। सो लेट मी ओके, देखते हैं अभी क्या हुआ है चेंजेस। हाँ, एक बार चेक कर लो कि जो चेंजेस तुमने किए हैं वो सही फ्लो में है। फिर देखेंगे कि क्या सब वैसा चल रहा है जैसा तुम चाहते हो। धीरे धीरे सब फिट हो जाएगा। नहीं, अभी भी अजीब है। कोई टेंशन नहीं, ये सब डीबगिंग का हिस्सा है। बस आराम से देखो कि कौन सा स्टेट कब अपडेट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते रहो और धीरे धीरे तुम्हारा कैलकुलेटर एकदम सही बिहेव करेगा। यहाँ पे दो लॉजिकल एरर है। रिजल्ट के हाँ, बाद अगर नंबर प्रेस हो तो न्यू कैलकुलेशन स्टार्ट होना चाहिए। अब रिज़ल्ट आने के बाद, यस, रिज़ल्ट आने के बाद बेसिकली मेरे को कोई भी ऑपरेटर अगर मैं प्रेस करता हूँ रिज़ल्ट आने के बाद, देन वो एक नया कैलकुलेशन होना चाहिए, राइट? सो आई वांट दैट थिंग। बिल्कुल वही सही तरीका है। रिजल्ट आने के बाद अगर यूज़र कोई नया नंबर दबाए तो करंट वैल्यू को फ्रेश शुरू करो, और अगर यूज़र रिजल्ट के बाद ऑपरेटर दबाए तो प्रीवियस वैल्यू को उस रिजल्ट से सेट कर लो ताकि अगला ऑपरेशन उसी पर हो। ओके, यही। अभी 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 ये परफेक्टली चल रहा है। वेट, अभी ये परफेक्टली चल रहा है। अरे वाह, अब जब तुम्हें सही लग रहा है तो बस इसे थोड़ा टेस्ट करते रहना, और अगर कोई छोटी चीज़ भी ट्वीक करनी हो तो तुम्हारे हाथ में है। अब तुम सच में एक सॉलिड फाउंडेशन पर हो। ओके, मैं ना ये पूछ लेता हूँ मैंने क्या गलत किया था। सो मुझे बताना, ठीक है? तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी है मुझे ये बोल रहा है कि तुम रिज़ल्ट के बाद स्टेट रीसेट नहीं कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? मैं ये कर रहा था डिस डॉट प्रीवियस वैल्यू इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड डिस डॉट करेंट वैल्यू को नल कर रहा था, मतलब एम्प्टी कर रहा था, एंड करेंट ऑपरेटर को एम्प्टी कर रहा था। तो बस रिज़ल्ट स्टोर हो गया, काम ख़त्म। सो ये गलत एजम्पशन था मेरा। प्रॉब्लम कैलकुलेटर को ये नहीं पता कि यूज़र न्यू कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है, ये पुराना रिज़ल्ट पे ही आगे कैलकुलेशन कर रहा है। सो कैलकुलेटर कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है। यस, यही हो रहा था, कभी स्टेट अपडेट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्या फिक्स किया है, दिस डॉट रिजल्ट सॉन इक्वल टू ट्रू एक बूलियन वैल्यू लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि रिज़ल्ट हमने देख लिया है। ओके, मैंने क्या रखा था, तुमने रिज़ल्ट को स्पेशल केस नहीं माना। ओके, तुम ट्रीट कर रहे थे नॉर्मल नंबर इक्वल इक्वल रिज़ल्ट। ओके, पर कैलकुलेटर लॉजिक में रिज़ल्ट एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, उसके बाद बिहेवियर चेंज होता है, करेक्ट? सो तुम्हारा लॉजिक 5 बस एक नंबर था। सही लॉजिक 5 इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, ऑपरेटर प्रेस होते ही चेन कंटिन्यू। हाँ, ये मुझे चाहिए था जो अभी फिक्स कर दिया है। सो ऑपरेटर चेनिंग का रूल मिसिंग था। उसके बाद तुम डिस्प्ले को स्टेट का सोर्स बना रहे थे। तो ये मेरा था रूट कोजेस वन लाइन थ्रू, तुम इवेंट्स लिख पा रहे थे पर स्टेट मशीन नहीं सोच रहे थे। तो मुझे बताओ। तुमने एकदम सही समझा। असल में कैलकुलेटर एक छोटी सी स्टेट मशीन की तरह होता है। जब रिजल्ट आता है तुम उसे एक स्टेट ट्रांजिशन की तरह सोचो, यानी अब या तो नया नंबर शुरू होगा या नया ऑपरेटर। तुमने जो फिक्स किया वो सही था। तुम्हें बस हर बार स्टेट को ध्यान में रखकर डिस्प्ले और बिहेवियर बदलना था। अब तुम्हारा कैलकुलेटर स्टेट अवेयर हो गया। बढ़िया काम किया। ओके, सो ये स्टेट अवेयर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी वही प्रॉब्लम है, लाइक
ये सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, अभी ये पूरी तरह सॉलिड नहीं है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी मिली जुली होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम एक एक प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करते जाओ। जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करो, ऑपरेटर और डिस्प्ले हैंडलिंग अलग अलग मेथड्स में रखो। धीरे धीरे तुम्हारा कोड सॉलिड के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करने लगेगा। तो सॉलिड प्रिंसिपल में जो एस है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हमें अलग अलग क्लासेस बनाने हैं या अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं एक ही क्लास के अंदर? देखो, एक ही क्लास में अलग अलग फंक्शंस भी ठीक है, जब तक हर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ हो। लेकिन अगर एक क्लास बहुत बड़ी हो जाए, तब तुम उसे अलग अलग क्लासेस में भी बांट सकते हो। मतलब, जब तुम्हें लगे कि एक क्लास कई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही है, तब उसे और छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में है। हाँ, ये ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि जो कैलकुलेटर है वो तो ठीक है, वो पूरा कैलकुलेटर को हैंडल करेगा, नो डाउट। बट एक सिंगल क्लास सबको हैंडल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, क्लियर फंक्शन, अपेंड नंबर, अपेंड ऑपरेटर, देन कैलकुलेट एंड अपडेट डिस्प्ले भी। बिल्कुल। तो अब तुम ये सोच सकते हो कि शायद एक अलग क्लास सिर्फ ऑपरेशंस के लिए हो, एक सिर्फ डिस्प्ले हैंडलिंग और एक स्टेट मैनेजमेंट के लिए। जैसे जैसे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग करोगे, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। गुड जॉब स्पॉटिंग। सो मैंने एक क्लास ऑपरेशन बनाया है। ऑपरेशन के अंदर मेरे क्या क्या वैल्यूज़ जाएंगी? को तुम ऑपरेशन वाली क्लास में वो चीज़ें रख सकते हो जो असल गणितीय काम करती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तुम वहाँ प्रीवियस वैल्यू, करेंट वैल्यू और ऑपरेटर को लेकर रिजल्ट निकालने वाले मेथड्स रखो। इससे कैलकुलेशन साफ रहेगी और बाकी क्लास सिर्फ इनपुट और डिस्प्ले जैसे काम संभालेंगे। ओके, लेट मी डू वन थिंग। पहले हम क्लासेस को बना लेते हैं सारे, उसके बाद ये वन बाय वन उसमें रखेंगे। तो एक क्लास हो जाएगा अपना ऑपरेशंस, और एक क्लास हो जाएगा अपना इनपुट के लिए। तो उसको क्या नाम दूँ मैं? तुम उसे कुछ स्पष्ट नाम दे सकते हो, जैसे इनपुट हैंडलर या इनपुट कंट्रोलर। इसका काम बस यूज़र इनपुट लेना और उसे सही ऑपरेशन या स्टेट तक भेजना होगा। इस तरह सबकी जिम्मेदारी साफ साफ बन जाएगी। ओके, मैंने एक को नाम दिया है इनपुट इनपुट कंट्रोलर। सो ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा होगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के लिए क्या नाम दूँ? डिस्प्ले कंट्रोलर। हाँ, डिस्प्ले कंट्रोलर एकदम ठीक नाम है। इससे साफ पता चलेगा कि ये क्लास केवल स्क्रीन पर क्या दिखाना है वही संभालती है। अब तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह बांटना शुरू कर दिया। अब हर क्लास अपना अपना काम करे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 क्लास बनाया है। क्या मुझे और भी क्लास बनाने हैं? अभी 3 क्लास अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती, इनसे मैनेज करो। बाद में अगर कुछ बड़ा होने लगे तो तब सोचेंगे। फिलहाल इन तीनों को अच्छे से बांटकर मज़े से आगे बढ़ो। ओके, सो मैं now use पहले क्या प्रॉब्लम होती जो तुम पहले कर रहे थे? गॉड क्लास बन जाती है, टेस्ट करना मुश्किल। ओके, तो अभी वन रीज़न टू चेंज वाला कर रहे हैं। हमने 3 फंक्शन बनाया, सॉरी क्लास बनाया, डिस्प्ले कंट्रोलर, इनपुट कंट्रोलर, ऑपरेशंस। तो यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोलर में सिर्फ यूआई अपडेट होंगे, यूज़र इनपुट एंड स्टेट होगा। इनपुट कंट्रोलर में फिर प्योर कैलकुलेशन लॉजिक होगा।
सो यस, हम ये डिस्प्ले कंट्रोलर, ओके डिस्प्ले कंट्रोलर पहले बना लेते हैं, डिस्प्ले कंट्रोलर, हाँ। देन रुको, मैं जब तक बोलता नहीं बोलो मत। देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशंस मैंने ये लगा दिया। उसके बाद ऑपरेशंस के बाद स्टेट इनपुट कंट्रोलर, सो यहाँ पे स्टेट, क्या मुझे ओके अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम भी बोलना, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है चैट जीपीटी। लाइक अभी ये जो स्टेट कंट्रोलर है, सॉरी क्या नाम था मेरा, इनपुट कंट्रोलर है, यहाँ पे स्टेट प्लस इनपुट प्लस स्टेट मैनेजमेंट हो रहा है, तो क्या मुझे स्टेट मैनेजमेंट के लिए अलग से क्लास बनाना चाहिए? देखो, अभी शुरुआत में इनपुट कंट्रोलर में ही स्टेट रख सकते हो क्योंकि छोटी एप्लीकेशन है। लेकिन अगर स्टेट कॉम्प्लेक्स हो जाए, कई स्टेट्स, कई ट्रांजिशंस, तब एक अलग स्टेट मैनेजर या स्टेट कंट्रोलर बनाना अच्छा रहेगा। अभी के लिए जब तक मैनेज हो रहा है, कीप इट सिंपल। सो अभी जो मुझे क्लास यूज़ करना है, कौन सा वाला क्लास मुझे यूज़ करना पड़ेगा, लाइक क्या यूज़ करना है लाइक? अभी तुम्हें उन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे और उन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा। जैसे इनपुट कंट्रोलर यूज़र इनपुट ले, फिर ऑपरेशंस क्लास को कैलकुलेशन के लिए कॉल करे और डिस्प्ले कंट्रोलर स्क्रीन अपडेट करे। तो तुम्हें तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराना है। ओके, यहाँ पे एक इशू आ गया है, काम कर रहा है, नो डाउट काम कर रहा है, बट वही चीज़ है कि ये स्टेट अपडेट में दिक्कत दे रहा है अगेन, जैसे मैंने ये सेपरेट किया। हाँ, जब तुमने अलग अलग क्लास बनाई तो अब तुम्हें ये क्लासेस एक दूसरे को ठीक से स्टेट पास करे, इसका ध्यान रखना होगा। यानी जब एक में स्टेट बदले तो उसे दूसरे को बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इवेंट या कॉल बैक का सिस्टम सेट कर लो, फिर सब बढ़िया स्मूथ चलने लगेगा। तो क्यों नहीं हो रहा है अपेंड ऑपरेटर में? ये ब्लॉक देखो, ओके अपेंड ऑपरेटर में दिस डॉट रिजल्ट शोन, दिस डॉट ऑपरेटर, ओके ये है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर को सेट कर रहा हूँ, बट डिस्प्ले अपडेट नहीं कर रहा हूँ, और रिटर्न से फंक्शन ख़त्म हो जा रहा है। तो अभी मैं इनपुट कंट्रोलर एक कैलकुलेटर स्टेट क्लास बना लेता हूँ। सो कैलकुलेटर स्टेट क्लास इनपुट कंट्रोलर से हटके हो जाएगा। सो अभी कैलकुलेटर स्टेट एक क्लास हो गया, अभी इनपुट वाले को हटा देता हूँ। इनपुट में अभी सिर्फ इनपुट रहेंगे, तो वो बेटर रहेगा आई थिंक, वो सिर्फ इनपुट के लिए ही काम में आए तो बेटर रहेगा। सो लेट मी चेक दिस वन 5। ओके अभी तो मुझे फिर से वो अपडेट करना पड़ेगा। सो नाउ इनपुट कंट्रोलर मुझे डिस्प्ले ऑपरेशन, और अभी मुझे एक और क्लास बनाना है बेसिकली न्यू। सो अभी नाम क्या है मेरा इसका,
कैलकुलेटर कैलकुलेटर स्टेट। सो यस, मुझे ये भी करना है। तो हाउ कैन आई डिस्प्ले, how can I use this right now I need to use like this. So 4 plus 8 equal 12, multiply 6 equal 72, divide by 9 equal, okay, now it is what I want. बिल्कुल। अब तुमने स्टेट को अलग करके और इनपुट ऑपरेशंस डिस्प्ले को अलग अलग हैंडल करके एक प्रॉपर फ्लो पा लिया है। अब तुम्हारा कैलकुलेटर स्टेटिव है, मॉड्यूलर और प्रेडिक्टेबल है। अब यही स्ट्रक्चर तुम आगे भी यूज कर सकते हो। गुड जॉब। सो आई थिंक अभी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हैंडल हो रहा है। अभी वो कैसे, तो यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोलर बनाया। डिस्प्ले कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में मैंने डिस्प्ले आईडी को पास कर दिया। जो भी इनपुट से आएगा वो डिस्प्ले आईडी होगा, है ना, और वो डिस्प्ले हमारा हो जाएगा इसके अंदर। फिर यहाँ पे शो एंड क्लियर दो वैल्यू बनाया मैंने डिस्प्ले कंट्रोलर में कि उसको दिखाना है या हटाना है। बेसिक सा वैल्यू है, तो वो है क्लियर के लिए, तो क्लियर वैल्यू एम्प्टी है। फिर कैलकुलेटर का स्टेट डिफाइन किया है जिसमें एक रीसेट आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट ट्रिगर हो जाएगा। अगर पहली बार लोड हो रहा है तो वो रीसेट हो जाएगा, अगर कुछ है उसमें तो वो खाली हो जाएगा। देन सेट नंबर, तो यहाँ पे नंबर को सेट कर रहे हैं हम। उसमें रिजल्ट डॉट सोन अगर ट्रू है तो यहाँ पे सेट कर रहे हैं करंट वैल्यू के अंदर उस नंबर को जो भी हमने टाइप किया। फिर ऑपरेटर को भी सेट कर रहे हैं बेसिक सा, वैसे ही जैसा हम लोग नंबर को सेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये स्ट्रक्चर अब साफ लग रहा है। डिस्प्ले कंट्रोलर सिर्फ यूआई संभाल रहा है, स्टेट क्लास तुम्हारा डेटा और लॉजिक संभाल रहा है, और इनपुट कंट्रोलर इन सबको जोड़ रहा है। यानी तुमने सॉलिड की तरफ सही कदम ले लिया। अब बस इसी को रिफाइन करते रहो, तुम्हारा कोड लंबी दौड़ में टिकेगा। ओके, तो सॉलिड प्रिंसिपल का एस तो हो गया, अभी आई की बारी है। हाँ, अगला आई यानी इंटरफेस सेग्रीगेशन। लेकिन पहले तुम ज़रा एक चाय पी लो। आई पर फिर कभी बात करेंगे, जब तुम्हारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे जो अलग अलग इंटरफेस पसंद करेंगे। नहीं, एक्चुअली क्लाइंट की बात नहीं है ना, यहाँ पे मैं सीखने बैठा हूँ, तो तुम्हारा काम है मुझे सिखाना। बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब है कि क्लाइंट को बस वही इंटरफेस देना चाहिए जो उसे ज़रूरत हो। मतलब जो क्लासेस तुम बना रहे हो, अगर कभी कोई क्लाइंट सिर्फ डिस्प्ले लॉजिक ही चाहे तो उसे ऑपरेशंस वगैरह से परेशान ना होना पड़े। सो अभी तुम मुझे ये बताओ कि इन चारों क्लास में से मैं कैसे इंटरफेस बनाऊँ, किसको बनाऊँ।
देखो, अगर इन चारों में कोई क्लाइंट को अलग अलग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, तब इंटरफेस यूज़फुल होगा। मान लो कोई क्लाइंट सिर्फ डिस्प्ले को ट्रिगर करना चाहता है, तो डिस्प्ले कंट्रोलर का छोटा इंटरफेस बन सकता है। अगर अभी सब टाइटली इंटीग्रेटेड है, तो अभी इंटरफेस की ज़रूरत नहीं। बस जब अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग टुकड़े चाहें, तब इंटरफेस से काम आसान होगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में कोई ऐसा यूज़ केस है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इंटरफेस कैलकुलेटर में कैसे करेंगे हम लोग, लाइक चेंजेस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को खाली ये स्टेट मैनेजमेंट और मॉड्यूलर की ही ज़रूरत है, राइट? हमने दोनों कर लिया, मॉड्यूलर भी कर लिया और स्टेट मैनेजमेंट भी कर लिया। तुम बिल्कुल सही हो। इस सिंपल कैलकुलेटर में इंटरफेस से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सब टाइटली रिलेटेड है। इंटरफेस तब काम आएगा जब तुम्हें अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ देनी हो। फिलहाल तुम्हारा फोकस सही है। स्टेट और मॉड्यूलैरिटी तुम्हें क्लीन कोड दे रहे हैं। सो तुमने जो किया वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बट अभी द थिंग इज, लेट सपोज अगर ये कैलकुलेटर किसी वेबसाइट में है एंड वहाँ पे मान लो, ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिसिंग कर दिया, वो है हिस्ट्री दिखाना। तो क्या हिस्ट्री दिखाने वाले में इंटरफेस सेग्रीगेशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर एक क्लाइंट को सिर्फ हिस्ट्री दिखानी है और बाकी कैलकुलेशन नहीं, तो तुम हिस्ट्री इंटरफेस अलग बना सकते हो। इससे बाकी ऑपरेशन या डिस्प्ले क्लाइंट को परेशान नहीं करेंगे। इंटरफेस से तुम ये तय कर पाओगे कि कौन किस हिस्से को एक्सेस करे। तो हाँ, हिस्ट्री वाला इंटरफेस यहाँ एक अच्छा यूज़ केस बन सकता है। नाइस नाइस नाइस, ओके, समझा समझा। अभी इसका यूआई बिगड़ा हुआ है। हाँ, इसका यूआई मैं चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ बेसिकली। सो कैलकुलेटर का यूआई बनवा दो। मैं तुम्हारे यूआई को कोड में नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। अगर तुम्हें बटन और डिस्प्ले को बेहतर दिखाना है, तो इस सीएसएस में थोड़ा स्पेसिंग, कलर्स और बॉर्डर रेडियस ऐड करो। एक सादा ग्रिड लेआउट या फ्लेक्स बॉक्स से सब एलिमेंट्स को बराबर रखो। अगर तुम्हें कोई खास स्टाइल चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा। हम्म कोई नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं बनवा लूँगा, डोंट वरी। सो यस, लेट मी डू दिस। सो पहले कैलकुलेटर का जो कंटेनर है, उसमें देखते हैं। एंड जब तक मैं ना बोलूँ बोलना मत, ठीक है? बिल्कुल, मैं चुपचाप इंतज़ार करूंगा। जब तुम बोलोगे, मैं वहीं से आगे बात करूंगा। बटन ग्रिड, बटन बटन ग्रिड भी हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या है? कॉमन बटन स्टाइल, तो बटन को कॉमन बनाते हैं। देन उसके बाद नंबर बटन को ले लेते हैं, ऑपरेटर बटन को ले लेते हैं, नंबर बिल बटन एंड देन ऑपरेटर बटन को भी ले लेते हैं। हाँ, अब जब तुम्हारा स्टाइलिंग सेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा कैलकुलेटर एकदम बढ़िया दिखेगा। जब सब तैयार हो जाए, तो मुझे इशारा कर देना।
Nice. हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। अगर तुम्हें कुछ और ट्यून करना हो या बस अपने क्रिएटिव वाइब्स जोड़ने हो तो मैं यही हूँ। कीप इट फन। कैलकुलेटर तो अभी एकदम तगड़ा दिख रहा है, फंक्शनैलिटी तो हमने बना लिया। अब कैलकुलेटर काम कैसे कर रहा है वो एक बार देखा जाए। सो यस, थोड़ा बहुत यूआई इशू है बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो क्लियर बटन काम कर रहा है, 2+3 5, ओके, ये काम कर रहा है। सो हिस्ट्री बटन कौन सा होता है? लाइक वो जो बैकवर्ड दबाते हैं, बैक स्पेस, वो वाला होता है क्या हिस्ट्री बटन? नहीं, हिस्ट्री बटन वो होता है जो तुम्हारी पूरी पिछली कैलकुलेशन दिखाता है। जैसे तुमने 2+3 किया, फिर ×5, तो वो पूरा हिस्ट्री दिखाएगा। बैक स्पेस तो बस एक आखिरी डिजिट हटाता है। अगर तुम हिस्ट्री दिखाना चाहो तो एक लिस्ट में पूरी कैलकुलेशन रखनी होगी। सो यूज़ केस है क्या हमारे कैलकुलेटर में वो? देखो, यूज़ केस तब होता है जब कोई यूज़र अपनी पिछली कैलकुलेशन देखना चाहे, जैसे उसने क्या क्या स्टेप्स किए या वो दोबारा कोई स्टेप चेक करना चाहे। हाँ, ये ये तब यूज़फुल। यूज़फुल तो है, ये तो चाहिए ना। हाँ, अगर यूज़र को कभी पीछे मुड़कर देखना है कि उसने क्या क्या किया था। सो उससे पहले कीबोर्ड इनपुट भी चाहिए मुझे। सो लाइक अगर कीबोर्ड में कोई नंबर दबा दूँ। I'm sorry, but you've hit the time limit for this conversation. Please start a new chat to keep the conversation going. I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced. ओके, I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. क्या यार, इसमें वॉइस नहीं है? सो कैन यू टॉक विथ मी? Of course, I'm right here and happy to chat. Let me know what's on your mind or if there's anything specific you'd like to talk about or work on. सो डू यू हैव एनी लिमिटेशंस? Yeah, I do have a few limitations. For example, I can't see or interact with the physical world, and I also can't provide real time updates or access certain sensitive information. But I'm pretty good at helping with information, answering questions, brainstorming, and more. If you have any specific questions or anything you're curious about, just let me know. So I'm currently building one calculator app, and I build the functionality, we can say core functionality of this calculator app. Which are they? So basic calculation like plus, multiplication, minus, division, and clear functionality, and show result by clicking on this equal button and all. So this I've done. Now I want to integrate, uh, and also I have done with solid principle S, which is the single responsibility principle. So I done, and also I have completed this modular design pattern, as well as this state design pattern inside this calculator app. Now I want to integrate this keyboard support feature, means whenever in keyboard a user will type any number, then that will reflect in our application. Now it is not happening. So do we need to create another class? Currently I have this operation class, then I have this input controller, then I have calculator state, then I have display controller. So do I need one more class for this handling keyboard support?
That sounds awesome. You've already put a lot of work into the architecture. In terms of integrating keyboard support, you don't necessarily need to create a whole new class. Instead, you can handle keyboard events within your existing input controller class. This keeps everything nicely organized and follows the single responsibility principle. What you can do is add a method in the input controller that listens for keyboard events and maps those events to the appropriate actions like appending numbers, operators, and handling the equal and clear functions. This way you keep your logic streamlined and everything remains modular and maintainable. If you do feel like the keyboard handling is growing too complex, then you can definitely consider a separate class or module, but usually it can be neatly integrated into the existing structure. If you want, I can help you with some sample code or guide you through the implementation. Yes. Awesome. Let's dive right in. We can start by adding a keyboard event listener to your input controller class. This will involve mapping the key presses to the same methods you're already using for button clicks. Here's a step-by-step approach. 1, add a keyboard event listener. Inside the input controller constructor, you can add a kdown event listener to the document. 2, map keys to actions. Check the e.key value and call the appropriate method. For example, if the key is a number, call append number. If it's an operator, call append operator. For enter equals, call calculate. And for backspace, handle the deletion. Ensure consistency. Make sure the keyboard input and the button clicks are both updating the same calculator state, so everything remains synchronized. Let's add a quick example to your input controller class. Wait. So I need one keyboard handler. Exactly. You can incorporate a keyboard handler directly into your existing input controller class. That way you keep all your input logic centralized and maintain the modular design you've already built. So the keyboard handler will simply listen for keydown events and map them to the same methods you use for the buttons. This ensures that whether the user clicks a button or presses a key, the calculator responds consistently. If you want, I can help you with a specific snippet to integrate that keyboard support smoothly. Just let me know. Wait. I'm doing something. Like I want to understand first where should I subtle this thing. So right now, if I directly include this keyboard support, this is the worst thing I would say it will become. I totally get what you mean. It's definitely important to keep everything clean and maintainable. One approach is to integrate the keyboard handling in a way that doesn't clutter your input controller class. For instance, you could create a separate module or function dedicated to listening for keyboard events and then trigger the appropriate methods on your existing controller. In other words, the key is to keep the keyboard logic separate but still connected. This way you can easily maintain and update it without causing any confusion or mixing responsibilities. If you like, we can go step by step and figure out the best place to put that logic so it stays neat and organized. Let me know what you prefer. Okay, let me copy this thing. I will copy this thing from this ChatGPT and all. Let me check if this is working or not. Sounds great. Take your time and definitely let me know how it goes. If you run into any issues or have any questions along the way, I'm right here to help out. Good luck, and I'm excited to see how it turns out. So I need one more button. Let me create one more button. Absolutely, that sounds good. If you let me know what kind of button you're thinking of, like a decimal point button, a clear entry button, or something else, I can definitely help you with the code and integration. Just let me know the details and we'll get it all set up. So I want to use this arrow. How can I use this arrow?
Got it. If you want to add an arrow button, like an arrow for navigating between previous entries, or maybe a back arrow for undoing the last action, we can definitely integrate that as well. For example, if you're thinking about a back arrow to undo the last number or operator, we can add a button and then create a method in your input controller to handle that action. Just let me know exactly what kind of arrow functionality you have in mind, and I'll help you implement it smoothly. No. I'm saying the design of that button, nothing else. I gotcha. That makes perfect sense. If you want to design an arrow button for your calculator, we can definitely make it visually appealing and not consistent with the rest of the design. For instance, if you want an arrow that points left or right, we can use a simple arrow icon or even a Unicode character. We can style it with CSS to match the look and feel of your other buttons. If you share a bit more about how you want the arrow button to look or its purpose, I can definitely help you with the exact styling and integration. So let me integrate this thing. Okay, first I will check this is working or not. Okay, now keyboard is working fine. Now I am integrating this thing, which is the history, and then backspace also I need. But first I will complete this history thing, and then I will go for like next part, which is the basically okay. That sounds like a solid plan. It's great to hear the keyboard integration is working smoothly already. Focusing on the history feature next is a fantastic idea. It'll definitely enhance the user experience by allowing users to review their previous calculations. And then once you have that in place, adding a backspace function will make the app even more intuitive. Whenever you're ready, just let me know, and I'll be happy to help you with the implementation details or any tweaks you might need. Good luck, and I'm excited to see how it all comes together. So right now this is the thing. Let me align item. I will do this at the bottom. What justify content left. That sounds good. Adjusting the alignment and making sure everything is positioned just right can definitely improve the overall look and feel of your calculator. Feel free to experiment with different CSS properties like align items, justify content, and any other layout tweaks to get the perfect arrangement. And if you need any help with a specific CSS or want to fine tune any part of the design, just let me know. I'm here to help. No, this is fine. Now I need this thing. Optional nice UX button trigger. Absolutely. Adding those nice UI touches will definitely make your calculator stand out. If you're thinking about things like subtle animations, smooth transitions, or even some hover effects for your buttons, we can definitely incorporate those as well. And if you want to do something like a history feature that shows previous calculations, or maybe a neat way to highlight the current input, we can definitely do that too. Just let me know which specific details or effects you'd like, and we can fine tune everything to make it look and feel perfect. So I'm just creating this button right now, and then I will let you know the functionality which I required later. So let me use this first, then I will definitely let you know.
Okay, now my buttons are ready, and I want the same button, uh, same color basically, which okay, let me paste this. Okay, now equals. Okay, now I need functionality also, so That sounds like a great plan. It's awesome that you've got the button set up and the design consistent. Once you're ready to integrate the functionality, just let me know the specific behavior you're aiming for, and I'll help you implement it step by step, whether it's handling the new button's actions or refining the UI further. I'm here to help whenever you need it. ओके सो ये बैक स्पेस हमारा डेटा और स्टेट को म्यूटेट करता है, सिर्फ यूआई को नहीं करता। सो इसको हम लोग यूआई के अंदर नहीं रख सकते है ना। सो मेरे पास ऑलरेडी एक मेथड है रिमूव लास्ट डिजिट। नाउ अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बैक स्पेस बटन और कीबोर्ड बैक स्पेस बटन कोई भी क्लिक होता है तो वो सबसे पहले इनपुट कंट्रोलर में जाएगा, फिर वहाँ से स्टेट कंट्रोलर में जाएगा जो कि कैलकुलेटर स्टेट है। वहाँ पे कैलकुलेटर स्टेट में जो हमारे पास फंक्शन है रिमूव लास्ट डिजिट, उसको ट्रिगर करेगा बेसिकली। फिर वो डिस्प्ले कंट्रोलर के पास जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा दिखाना है या नहीं दिखाना है। सो ये मैं कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो इसको मैं इवेंट मेरा कहाँ पे है, सारे इवेंट रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कीबोर्ड के अंदर इवेंट लगाया हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ कहीं पे लगा देता हूँ। ओके कीबोर्ड लगाया हूँ तो यहीं कहीं पे लगा देता हूँ एक। सो यस दिस इज़ द थिंग, आई थिंक आई नीड दिस। अब मेरे ख्याल से एक सेकेंड में टेस्ट कर लूँ। ओके नाउ दिस इज़ वर्किंग फाइन। ओके बैक स्पेस तो चल रहा है ना, बैक स्पेस ओके, कीबोर्ड वाला बैक स्पेस भी चल रहा है एंड नंबर इज़ ऑल्सो वर्किंग। Now history feature, only history feature is pending, so let me find that also. Okay, okay कीबोर्ड वाला तो अपना हो चुका है। Now I need history. That's fantastic. It's great to see that the backspace functionality and keyboard integration are working smoothly. Now, focusing on the history feature will definitely add another layer of usability for your calculator. You can keep the history feature pretty modular as well. For example, you can maintain an array in your calculator state that keeps track of previous calculations. Then your display controller can render that history whenever needed. When you're ready to implement the history feature, we can go through the steps to store each calculation and display it in a user-friendly way. Just let me know when you're ready, and I'll be more than happy to help you with that next step. So who is the owner of this history functionality? So let me check, history feature equals to interface segregation plus SRP का real use case. Okay, so we already did this SRP, but this solid principle S is done. Now I is remaining, right? For history we need interface segregation, as I am right. So now what I need to do, what history will do, it will calculate and store the past calculation
um, then we need to show that past calculation basically. So this will clearing the okay. So what architecture update I need one history manager class, sorry, history manager inside input controller. Okay, so basically this history manager class will maintain this history. Exactly, you've got it. The history manager can definitely take on the responsibility of managing and storing past calculations while keeping your architecture clean and modular. By doing so, you ensure that the input controller and display controller remain focused on their core responsibilities. And the history manager handles the historical data. So you can create a history manager class that will maintain an array or a list of previous calculations. Every time a calculation is completed, you can add that calculation to the history. Then, when needed, the display controller can pull from that history and show it to the user. Once you have that history manager in place, you can integrate it seamlessly into the input controller and ensure that everything stays organized. And if you need any help with the implementation details, just let me know. We'll get it all set up. Okay, let me do this first. I will try to do this first, then let you know. So cannot read a property add. Okay, okay, something is going wrong here. Let me No worries at all. Those kinds of errors are pretty common, especially when we're adding new features or linking different parts of the code. If you're seeing something like a cannot read property add error, it could mean that the object or array you're trying to push into isn't properly initialized or is undefined at that point. If you want, you can share a bit of the code snippet where you're encountering the issue, and I can help you troubleshoot it. Otherwise, just take your time, and whenever you're ready, I'm here to help you work through it. so basically this No problem at all. Sometimes these little debugging moments can take a bit of patience, and I'm here whenever you're ready. Just let me know if you need a hand with the code or any specific error messages you're seeing, and we'll get it sorted out together. Good luck with the integration, and I'm excited to see everything come together. okay. Absolutely. Just take your time, and whenever you're ready, or if you have any questions, feel free to reach out. I'm always here to help and support you along the way. Good luck with everything, and I'm looking forward to seeing how it turns out.
Absolutely no rush at all. Just let me know whenever you're ready, and I'm here to help out. In the meantime, enjoy the process, and I'm excited to see the final result. Feel free to reach out anytime. क्लाइंट को परेशान नहीं करेंगे। इंटरफेस से तुम ये तय कर पाओगे कि कौन किस हिस्से को एक्सेस करे। तो हाँ, हिस्ट्री वाला इंटरफेस यहाँ एक अच्छा यूज़ केस बन सकता है। नाइस नाइस नाइस, ओके, समझा समझा। अभी इसका यूआई बिगड़ा हुआ है। हाँ, इसका यूआई मैं चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ बेसिकली। सो कैलकुलेटर का यूआई बनवा दो। मैं तुम्हारे यूआई को कोड में नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। अगर तुम्हें बटन और डिस्प्ले को बेहतर दिखाना है तो इस सीएसएस में थोड़ा स्पेसिंग, कलर्स और बॉर्डर रेडियस ऐड करो। एक सादा ग्रिड लेआउट या फ्लेक्स बॉक्स से सब एलिमेंट्स को बराबर रखो। अगर तुम्हें कोई खास स्टाइल चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा। कोई नहीं, हाँ यहाँ पे मैं बनवा लूँगा, डोंट वरी। सो यस, लेट मी डू दिस। सो पहले कैलकुलेटर का जो कंटेनर है उसमें देखते हैं। एंड जब तक मैं ना बोलूँ बोलना मत, ठीक है? बिल्कुल, मैं चुपचाप इंतज़ार करूंगा। जब तुम बोलोगे मैं वहीं से आगे बात करूंगा। नाइस। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा। अगर तुम्हें कुछ और ट्यून करना हो या बस अपने क्रिएटिव वाइब्स जोड़ने हो, तो मैं यही हूँ। कीप इट फन। वेट, सो आई नीड
So guys, we have completed our LLD. We took we took help of ChatGPT bro, ChatGPT bhai we can say. So yes, let's understand what is the flow and what I did. Basically, I asked this CSS from ChatGPT, and we need to look that, and I will explain you. I can explain you. Okay. So for the time, sake of time constraint and sake of simplicity, I am using ChatGPT for that reason. But yes, I am not just only copy and pasting. I know what I am doing. That's why I told them whatever I want. I am asking him. Like I know when to use what. So by if I go to type, then it will take time to create this CSS, right? So that's why I asked ChatGPT for this CSS, and whatever changes he have done, I will explain you one by one. Basically, whatever I know, that knowledge is sufficient to create this calculator app. And rather than the more functionality can be added, like we added this history feature, but we have not added this history feature inside this uh, display. We can do that also. We can separate this display, like we can make two half, one upper part and one lower part. So whenever we click on this button, you can skip this alert, and then you can show that on the upper part, like a real calculator shows. So this is your task. I am not going to do that. I'm just doing this history thing. So you can use anything you want to, and you can create your own. So first of all, let me explain my HTML code. So basically what I did is I created one class div. So the class name is calculator, which I am using here. Okay, so this is the calculator. Basically this is the you can say this container. Okay, you can say container of this calculator, and you can tweak your color as well if you want to change your color. So you can change your color for this box shadow, or if you want to change your background color, then you can do that as well. But I am not doing this to my calculator. Okay. Okay, CSS is fine. Then this is input display. So this where this 18 is showing na, this is the display. Okay, so I made this input and I made this read only. Previously we have done this like, okay, this is read only. Previously we did disabled. Okay, previously we did this disabled. Now if we did disabled, then it will not be visible due to CSS issue. So okay, okay, let me redo this as disable. I need to refresh. Alright, this is going to refresh. So this will not do any such kind of like uh, modifications and all, because these both are same. Okay, this both are same. Now there is one more issue, this scrolling one. So you can fix that, or you can show show only 7 to 8 precision, whatever you want to show, because now this should be scrollable, right? That's why. So you can do read only or disabled. It's your choice. You can do anything you want. Basically your task is to not allow this display, not allow the users to enter something inside this display. Okay, he cannot click or he cannot do anything right here. So this is the case. And now let me do this read only mode. Okay, now so okay,
So after result, this is not going backspace. So yes, this is the thing. You can if you want, then if you want, or if your client or if your interviewer want this feature, then you can implement this after calculating result also. I'm not doing that. And yes, so next is my div for buttons. So I do have lots of buttons here. So as you can see, so there are lots of buttons in my calculator, which is 0 to 9. Then I do have this arithmetic operations, and then I have clear button, equal button, history button, then backspace button. Okay, you can remove this backspace button because our backspace is also working from keyboard, so you can implement that as well. Let's suppose I am clicking this backspace from my from my keyboard, so you can do that thing. Okay, so yes, this is my first calculator app, and the HTML is pretty simple. I have used this button ID and class ID. So basically this class ID is going to use inside this CSS basically. And okay, this is the button, and then this button number. So I am using dot, means whenever you use class, then you need to use dot here. And whenever you are going to use your ID as CSS property, then you need to use hashtag. Okay, so this is the thing you need to remember in your mind whenever you are applying some CSS and all. So this is the thing. And this ID, I am using this IDs in my index.js, where the core, or you can say brain functionality of this calculator application. So here I have nice commented document comment. So what I did was, previously I have only single class. Before that, previous day when I started this calculator building, then that time I used directly this JS page. I have not used any structures and all. After that I get to know that yes, to implement LLD, low level design, we need to implement we need to know about classes and objects and all. So yes, I know what is classes and objects and how to use. I saw in right now in articles and all, in this video itself on starting. If you haven't watched that, so you have to watch that part in the beginning part. And then uh, I used to separate this one by one. First I used to create class, single class calculator, then I implemented everything inside this same classes. Okay, after that we get to know that yes, now uh, we know how to use classes and constructor and parameters and all. Then we moved ahead and try to implement solid principle S, which is the SRP. So SRP stands for single responsibility principle. So we separated all the classes and all, like we created display controller, calculator state class, then operation class, then input controller class, then one more class is there, which is history manager. Okay, so these are the classes. Okay, so now history managers include one more thing. I am not going to that. Let's suppose before that history manager we created this all four classes, right? After that we need we get one more feature implementation requirement. So let's assume that client has gave to us that we client want this calculator as to show their history as well. So now there is no history because we have not calculated anything. Now we have history. So let's suppose
now we have lots of history, right? So this is the requirement came, and then again for that reason, for this feature, history feature, we need to integrate this interface segregation principle. Okay, we need to integrate that, which is the uh, thing like solid li. So this is the I thing, I guess. So yes, so what I did is display controller is handling the display thing. It will take it, the constructor is taking display id. So this is the display id, whatever we want to show, then that will show here, and from that html element, then we have two function inside display controller. One is show, one is clear. So whenever I click on clear button, it will clear the display. Whenever something is clicking, then this show function is triggering. Okay, whenever I am clicking something, this show function triggers, and then it will work. Okay, so like this. Then we do have calculator state. What is the state? Basically, let's suppose I'm doing something like I'm calculating something, and when I click on equal button, now the result is being updated here. So this is changing the state of the calculator display. Okay, so for that, first of all, constructor is resetting the thing. Whenever I restart the page or restart the calculator, then this will reset automatically. First of all, it will clear everything, and then after that, whenever I type something like 5, it will set the number. Okay, so it will set the number and to the current value. Then set operator, when I click on operator, it will trigger this set operator function. Inside operator, I will pass this, then it will set the operator and all. Then it will check if the current value is null or not. If it is null, then it will like if we do equal, then doing nothing, right? So this is triggering this line. Basically, now after operator, there is no current value. So that's why when I am clicking this equal button, now nothing happening because of this line. Okay, so this line takes care about this null thing. Okay, if your current value is null, then this is returning nothing. Okay, this is basically getting written, and then below code is not getting executed. After that, if the previous value also null, then we are returning calculator first. For example, let's take an example. Okay, so now it is not triggering. Okay, it is not triggering basically because of the try and catch error handling thing. What this line will do basically, if let's suppose I am doing nothing, and okay, I'm let's suppose, for example, hypothetical scenario, I'm clicking on this button. This should not appear, right? That's why this handling. But this line says, let's suppose I am clicking on this, then if this is not existed, then this should be written calculate first. Okay, so like that. Okay, so like that, this thing is working. And now there are lots of things we need to implement. Like for example, now I did minus. Now whenever I click on division, multiplication or plus, this symbol should change, because now I am not doing anything, right? This symbol should change. So this is your task to implement this. Try to implement this in your own, and yes, hopefully you can able to do this. Then I'm resetting this, then I have set operator after result. So basically, let's suppose we did this and equal. So after this, we need to apply this operator, right? So this function is helping me to do this kind of thing. And then yes, so basically this proper functional thing is known as module. So this is the module pattern, we can say module design pattern basically. And state are changing. So
in the display state is changing, and whenever we refresh state change. So that is the thing, state restart reset it. So we have used state design pattern as well. So how that state management is doing, so basically we have registered the events and all. Below here we can see this history. So this history functionality is working as state management, or you can say interface segregation part. So this is doing that part. Let me go to state. So this input controller, okay, this input controller is managing my, okay, this is my calculator state. Okay, this calculator state is the class who is responsible to manage this state. Okay, so I am using this state. So this is known as state design pattern. And in future, from next class we will going to start React, and we have enough knowledge from JavaScript, we can now start React as well. And by doing the projects we will learn the things like memoization and everything, each and everything from Java as well, so that we can prepare our interview in correct way. And we don't have much time, we have only 1 month. I have only 1 month to do this everything, including DSA. So yes, I have to wrap up things very fast, and I will try to complete this by 1 month. It is not possible, but yes, इतना तो करना है कि whenever interview will ask like what is design pattern, I need to explain him. Okay, I should explain them like what is design pattern, why we use that design pattern, and where to use that design pattern. I don't know. I know that 100% I know. I can give guarantee that I cannot code this machine round as of now in 1 month. But yes, I will try to explain them. If he is okay with that, then okay. Then otherwise I will get fail. Okay, bro, you are back. Bro, implemented, completed my calculator, but still some functionality was pending. So yes, I will not complete that functionality because my motive is was fulfilled. Like my motive was to understand how JavaScript function works and how to use them here. So I used that and implemented two design patterns. Basically, one is modular design pattern, and then another one is state design pattern. So I implemented that thing, and as well as classes and objects using JavaScript. And this is similar to Java and C++, to be honest. And then I learned how to reuse the like a DOM thing, and I can now do repetitive task in loop. So I learned that, and also implemented solid principle as an which is SRP principle, which is known as single responsibility principle, and interface segregation principle. So I use these two things. So yes, so from next I will use everything like slowly I will use like for that open for mm,
open for extension and closed for modification. I guess that is the full form of O, which is open closed principle. So yes, I will integrate that. And for L list scope substitution, I will use in maybe that will be come in to do application which we are going to do on next class. And yes, this is it. So what's your plan, bro, today? So let me first explain this. Display controller will handle this show and clear thing. Then calculator state. So this calculator state is very important thing for our calculator. So this is our design pattern as well. Constructor is resetting by default. Whenever we refresh or restart the application, it will refresh and reset everything. So this is the reset. It will reset everything. Then set number, whenever I click any number or any operator, then it will click on this set number and set operator. It will handle this thing, and current value will come this value, and then it will call input display and display class, and then it will go everywhere. Okay, like that. So yes, after that we have operation after result and all, calculate functionality, and then remove last digit basically for backspace thing. So yes, get display value means whatever it is getting here, it is coming from here. And yes, this is secure. And for CSS you can check. I think this is it for today's session. Today goal was completed. Let me push this. Where is my terminal? Where is my terminal? New terminal. Okay, data.
Okay. So okay, now I will post this tomorrow. Bro, basically NEET code is so hard. I just need to memorize the solutions and hope I get the question in the interview. Bro, okay, let's do one more stream, okay? So I'm continuing this stream. Let's connect in Discord. I'm also planning to complete those stuff because I want to eat that frog. Literally, I am already 4 days late. I am running 4 days late. So, are you free, bro, today? If you are free, then I will not sleep. I will not go to bed because tomorrow is Sunday. And yes, anyhow, I want to start a new topic from Monday. If you will stay with me in call, then I will not go to sleep. I will complete that thing. I am not home, but I can do. So what, bro? I will go to bed then. let's meet. Let's meet at night. EST. It feels so lonely, bro. What I completed, let me show you. My neat code 150. Where is my neat code? Neat code. So my array was completed, 2 pointer completed, stack completed. I am thinking to complete binary search, then sliding window, then this thing. So how many questions are pending in binary search? 1, 2. It is too cold here. Basically, bro, just eat some of the champaran water. Bro, that is too costly. That dish cost a lot here also. No, bro. Who will going to cook that thing for me right now? It's 20 to 8 means 10 p.m. No one is going to cook for me. Yes, and today was my fast also. I am doing this stuff. Now I can feel. I'm not able to talk anymore. Probably I will learn some like basic things. Do you like puri? Yes, bro, but not too much because puri is not good for health. I am
I'm very like I'm very I take care of myself very much. But when I am hungry, then I will not see what is this and that. No, bro, puri was not healthy because we use palm oil na to create to make to cook puri. That's why that chapati you can eat. Chapati was healthy. You can say roti, chapati, roti. Naan is also not healthy. Okay, bro. So keep that in mind. It depends on which oil you are cooking. So anything you are cooking in palm oil, then that is not healthy. For example, take one burger. Okay, any burger. Okay, any. I will not take name. That taste very well. You love that thing, but for health purpose, that is not good thing. It's all maida, bro, maida. So pasta and your naan are made up of same thing. You can say sperm of wheat. Rice rice I eat rice because we are North Indian na, so in North and South Indian we eat rice. Yes, every day we eat rice. In occasionally like occasionally or someday we don't want to eat rice, then we eat chapati. But yes, we eat rice every day. Lots of carbs. Basically rice is easy to cook na, that's why. Yes, chole is kind of puri, variation of puri you can say. But that is also not healthy, bro. Occasionally it is fine, but yes, that is similar to okay, chole. Oh, forget. Okay, chole is nice. I thought something else. Yes, chickpeas. That is healthy if you eat without masala. If you put that masalas and all, that becomes unhealthy. That's it. That masala was not healthy, na bro. Whatever you put in chole. If you boil the chole, that peas and all, then that is healthy for your health. That is healthy. Just eat that peas. Whatever butter chicken and paneer tikka, bro. I'm biased with chicken, so I will neglect paneer. Paneer have no taste by its own, I believe, but butter chicken over paneer tikka. But try like fried chicken or something like that. You have only eaten, I think, butter chicken only there, but try something else. Chicken tikka, bro. Butter chicken or chicken tikka means my chicken tikka, not butter chicken.
If there is only one option, then chicken tikka over butter chicken. I don't like that butter. Chicken tikka or chicken saag wala. It depends. Now it depends ki who is making and how the taste was and look wise. But yes, it depends from like if I'm taking rice with chicken, then chicken saag wala. If I'm not taking rice and all, then chicken tikka for sure. Bro, tomorrow is Sunday. Tomorrow I will plan. I don't like spinach. Okay. Chicken korma or chicken lababdar or chicken changezi. If I get three of them, I will take three of them and finish it. But chicken korma and changezi was different. Yes, if I get three, then I will take three. um, my stomach can handle three of them. What you like the most? What you get there? Only butter chicken or something else? Yes, bro. Come to my marriage. I will. I will taste you. What I would say. I will make you taste every dishes from every corner of the India. In one place, you will get everything. So you have more than 1.5 years. Yes, just come to my marriage. I will show you different dishes over this butter chicken. There are lots of things. If you want to eat pork, that is also possible here. I will arrange for you specially. Except beef, you will get everything. Because where I live, there is no beef thing and all. I think in south, I also don't eat, but if you want, then I will manage for you. I only love that chicken and mutton, that's it. No debate. But yes, chicken like uh, not too costly, but yes. Okay, nice. So yes, do make a plan for upcoming like after 1.5 year. So yes, bro, it depends on the cook. Yes, but it depends how they cook. If you eat with friends, then you will not feel anything. You will enjoy everything like that. It depends on very various thing. Like if you go to restaurant and eat, then probably that taste different.
And if you hang out with your friends and then eat, then that tastes different. Like that thing, I believe. You need to find the best cook in India. The way you are, I basically. Bro, don't worry for that. I am the cook. I can cook. I will cook for you. Don't worry. But yes, we will find some good restaurant or something like that. We will order and we will. I will serve you. Don't worry. So yes, I will not find any cook. Instead, I will make my wife cook. So probably in 2-3 years, I can eat something really good. Yes, if you know somebody, then you can get give referral. That is the optimal. Yes, bro. We need to find some optimal algorithm which can cook very nicely, so that we can get every dish in order of one time complexity. Yes, yes, bro. Yes. So you need to tell your girlfriend also to start learning cook and all. If you marry her, then how can you eat? If I had delicious breakfast served to me every day before I work, I would just much happier every day. Yes, that's why I'm thinking, na. That's why I'm saying, like, um, what I would say in Hindi, we say bhabhi, okay, bhabhi, like brother's wife. So you are like my brother. So I'm saying that uh, to your girlfriend that you say to her to learn cooks very well, so that you can eat nice dishes every day, instead of like, otherwise you have to cook and you have to serve for her. Bro, tomorrow is my HLD exam. I don't know how can I do that. I'm not prepared.
High level design, system design basically. There are two types na, LLD and HLD. What I am doing in video, that is LLD, but my examination was for HLD, high level design. So yes, I have no experience but still I am giving exam for HLD. So yes. Oh, bro. Thank you for participating in placement code selection procedure. We regret to inform you that you haven't qualified. Okay, for the mock interview. I got rejected, bro. Will be added in a P22 bridge course group to brush up the skills required as per industry standard. You can attend the next placement code examination again just after completion of bridge course. For more detail we will discuss this in the orientation session. If you have any query, please okay join this group basically. Why WhatsApp business is opening, bro? Copy URL. How do you get rejected from a mock interview? Bro, I don't know about this Spring framework and React framework. Na, they ask me this question first. Let me ask you some framework question. I said I don't know anything. Which I know, like my background is from mobile application development, na, for Kotlin and all. So I got rejected by saying that this only, because whatever they have tied up with any SD role company, they ask Spring Boot, React, Mon Stack. I don't know about this thing, bro. That's why I'm learning this. So yes, I have 1 month to prepare everything including DSA. I need to give again that DSA exam. So I'm not the one who fail. There are 45 students including me. See what is the process. First I need to give exam. That exam will consist uh, purely based on DSA and system design, and in system design not HLD, only LLD. Okay, so if I pass that exam, DSA plus LLD, then after one or I got 3 weeks. After 3 weeks I got this call for mock interview. If I pass that mock interview, then I will get a chance to enter their placement cohort. So that placement cohort will have one WhatsApp group, you can say.
So there I don't know, they will enhance my profile basically, enhance my LinkedIn profile, resume and all, according to the industry standards, whatever their requirement is in the industry, whatever their JD, and whatever wherever I want to go basically, in which role. So they will enhance my profile. After enhancing my profile, um, I need to give again interview. That interview will be a real interview for my job. So yes, whenever the vacancy come on that group, I need to apply. If I get selected, then I will get call, interview and process and all, then I can get an offer. It depends. So yes, what do you think, in 1 month can I achieve this? Bro, DSA is the thing I cannot say I know very well, because previously they asked me geometry, not saying okay. Previously I gave interview for Google, right? So they asked me geometry. I don't know why. So I need to learn this geometry, because but bro, this is not easy. Do mock DSA interview with alpha codes, bro. What alpha codes? You need to use resource effectively. Yes bro, I know I'm using all the resources effectively, but the problem is my background. Actually I am from commerce background without maths, so I don't know anything about maths. Okay, I have not done this plus minus thing also, like I have done in my school before 10th class. So it's been around 15 years ago. So after that I have never used this plus minus thing. I just use calculator on my phone if I need, and I started using in my BCA, which is after college, after finishing college. Pattern previous question. Bro, I for DSA I don't rely on this PYQ thing, like previous year ask question and all. And yes, I will do something. I figure out patterns, so I need to start with free mind. That's why I want to complete this entire thing by tomorrow. So linked list, sliding window and binary search, these three things are remaining. So I will complete this by tomorrow. Anyhow I will complete. Yes, today I want to complete this stack, so I completed stacks fully, finally, ekdam chakachak, I can say. So yes, sliding window, linked list and binary search, tomorrow is my target. Tomorrow I will complete, and day after tomorrow, from Monday I will start maths and geometry. For 2 days straight I will do that stuff. I will not do this thing. No, okay. So this happens for another company, but not for Google. Uh, Google will, whenever you apply for Google, na, question will not repeat. They will ask you question like, how can I explain? They will ask you question like in a story manner, basically.
They will tell you some story. You need to figure out what is this question. Like that car fleet. I hope you you have seen that car fleet and you have not getting any idea what is this, what is mean by car fleet and all. So yes, that cocoa eating banana, car fleet, daily temperature. So there are lots of question like that. Yes, bro, car fleet question. Good. Yes, literally for me also. I never figure out that this car fleet question is from stack question. Literally. Coco eating banana, but Coco is eating banana. He is enjoying banana. We are what we are doing? We are calculating his banana. How fast he can eat banana. We are calculating he is enjoying banana. So yes, like this question you will get in interview, and probably see. Yes, I would say that prepare your string and string matrix and graph and DP very well for Google interview. I will try to do that. I will attempt one Google interview for sure. I will do this for sure after confidently like I when I get confident in DSA na, I will message her that I am ready, please give me a chance. So yes, they have their own CRM system like in every company. So they will enter your name and they will save your name there. And whenever you apply na, bro, would you ever go into AI? No, I will not go. No, because I am not from maths background. I am not going to AI. No, no, no. I am not going to that direction. I am not going. My childrens will go here. I am not going, bro. Because see, I need to learn that those things like linear algebra and all, but I don't think so. I have much time to learn those concept and all. Instead, I will stick here for next 20 to 25 years and I will retire. So are you planning to go with AI? I think AI will burst in some years. I am using AI like never used or tomorrow AI is going to shut down like that. I am using the AI. They have told me that you have hit your usage limit. I already paid. I am pro subscription, then though I am getting this this thing. Yes, I also same thing, same thing. Probably if I want to do PhD in computer science, then I will think yes, quantum computer, but we need lots of maths plus physics for quantum computing. Bro, I am not from science background, bro. I cannot think about quantum system. I am not going to learn physics and all. But yes, if challenges come in my like in my road, I will take. No, just work on application, not research. Yes.
Depends na, when we go to PhD na, but I don't think so quantum applications are available right now. They have only tested na, Google just tested their quantum computer, but that is the initial phase. It will take around 15-20 years it will take, I guess, to launch the chip and all. Yes, 20 to 25 minimum. Yes, potential is crazy in quantum. I know. But I think we will not see that thing in maybe. AI is going to shut down, bro, after 10 to 15 years. After 10 to 15 years, no one is going to uh, use AI because all AI companies are getting in loss already. I don't think so. In 10 years, it is possible to come out with quantum computer because the reason is compute power. Who will give compute power to Google? All the chips are, I think, all the chips set are sold out for next 10 to 15 years. I think who buy, I don't remember who buyed, but I think Nvidia buyed, maybe. So everyone is fighting right now. I want cheap, I want cheap. Have you heard this news? That's the reason graphic card and this chips and all SSD and all are getting high prices. This is the reason. There is shortage of these chips and all. Someone buyed. I think Nvidia buyed. Yes, chips will continue go up and the three main companies will continue domain. Yes, someone has buyed this. I think Nvidia buyed all the chips and all contract taken by Nvidia. So yes, Google, Microsoft, everyone is crying for chips. Nuclear power restructuring Oklo will allow the power for. Let's see, but I think we are not so lucky to see that power. Maybe for we are not lucky that much to use that power, but we can see the changes. It depends. Just crack Google and go to their alphabet company and use. Let's go to desert, Sahara desert, and take all the sands and let's create a chip. Uh, so idea is not bad, but it is very costly, bro. We cannot afford right now. I am not able to afford this lead code premium right now. My client is not paying money.
will start a water company. Water. I will stream with you later and show you the problems. Bro, I am thinking to go to bed right now. And yes, do stream, okay? I saw your stream 4 days later, 4 days ago. Yes, 4 days ago. Hey, by the way, one more thing. I like your keyboard sound, bro. Can you tell me the keyboard sound name? I am also using mechanical keyboard, but mine was kit 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 आवाज आ रहा है. I am not streaming anymore. Why? Stream na bro. It will see uh, before streaming, or you can say on the start of this streaming, I am also not able to speak. When you came, my confidence boost up, and now I am able to, at least I can talk in English right now. It breakable English, but yes, okay English. I am learning new words. So yes, I am seeing this YouTube videos and all in English, so that I can learn something new and all. I will start reading also. I will start this DSA Alpha 7 Ola 7 5 one second. Ola 7 F75. Okay. Okay, you are using this one. Looking nice. I really like the. Oh my god. This is so costly, bro. For keyboard. Ola F87. Okay. So what this mechanical keyboard known basically? Is there any type? Because I do have one mechanical keyboard. How much does it show for you? I can see Ola 7 F87, which is 5499 rupees. It is about $30, I guess. Let me check. No, I am seeing the different one. But yes, now I cannot afford this also $30 thing also. Because I am not earning now, bro. When I earn, then I need to buy this thing for sure, because I really need, and I like this mechanical keyboard, yeah. I literally like this kit sound. I love this thing. Let me add this in my favorite list. Yes, I need that creamy sound, but mine was like kit, like mechanical, full vibe. I like this one also, but that creamy sound I really like. Ola F75 keyboard. Okay, this is not too costly, bro. End spot, okay. EvoFox also there, but I don't know. EvoFox sound and my keyboard sound are same. So Katana X2 not showing this Kyo Swam.
Everything is showing, but this Ola is not showing in Flipkart. In Amazon there is showing. Okay, nice. When I will get job, then I will buy, because this n thing, I don't know what happened to this n. Whenever I type n, it will type 2 or 3 times, but everything is good. But my main motive is to purchase this thing, lead code premium. When I do alone coding, like vibe coding and all, then I like this sound, because it feels like somebody is talking with me. Yes, mechanical keyboard. My sound is different and your keyboard sound is different. I thought when I searching for this keyboard na, so I heard the sound. No, yes, I can replace the keys. Yes, my keys are blue. But sound is different. When I was searching for mechanical keyboard na, I searched on YouTube and I loved what your keyboard is sounding right now. So I thought all mechanical keyboard will sound same, but when I bought then I get to know that mine was different. No, the switch to fix, then showing multiple times. You can replace switch so the n doesn't do multiple. Oh, that's the thing. I don't know about that thing. I I need to find my extra keys. I do have. But sometime it will create issue, not every time. Okay, this is creating issue only minimal time, sometime. But yes, this is okay for me. I can use this for next 3 to 4 years without any issue. नहीं आज नहीं निकला है. हाँ ले जा, मैं भी आ ही रहा हूँ. Yes, bro, don't buy butter chicken, bro. Today try different, not try different thing. Go to any Indian shop and ask him like what all dishes you have except butter chicken. Or you can try fish curry also. Fish curry, if possible, if there is possible. Okay, or you can try mutton curry. So yes, have lunch. I am going to bed right now. See you after 5 6 hours. After 6 hours.
Okay, I will wake up at 4:30 or 5 a.m. I will wake up at 5 a.m. and I will start streaming from 5:30 to or 6 a.m. IST. Okay. So, okay. Good night. Have a nice day.